नमस्कार, BizTak की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बड़ा दिन और बड़ी कंपनी के लिए बड़ा दिन। जी हाँ, 46वीं एजीएम है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। आज बस कुछ ही क्षणों में ये एजीएम शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। क्विक रिएक्शन उनसे ले लेते हैं। मेरे साथ अविनाश गोरखशेखर साहब इस समय मौजूद हैं। सनी अग्रवाल जी, हेड ऑफ फंडामेंटल इक्विटी रिसर्च टीम SBI कैप सिक्योरिटी से मेरे साथ मौजूद रहेंगे। विनय रजानी जी HDFC सिक्योरिटी से मेरे साथ से मौजूद हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और मुद्दा यह है कि रिलायंस की 46वीं एजीएम में मुकेश अंबानी के पिटारे से क्या निकलेगा। सबसे पहले अविनाश जी, एक कमेंट आपका। सर, बहुत एक्सपीरियंस है आपको मार्केट का। ये 1977 से लेकर अब तक एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम में। तो अभी इस एजीएम में आप क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हो? गुड आफ्टरनून रजत। देखिए, पहली बात तो जब भी रिलायंस का एजीएम होता है तभी मार्केट में एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो होता ही है। बट इस बार मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक्साइटमेंट ऑलरेडी मार्केट्स को पता है। जियो फाइनेंशियल का शेयर ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज इसके अलावा आएगा ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इसके ऊपर जो कमेंट्री मैनेजमेंट की आएगी, इनके ग्रोथ प्लान्स के ऊपर जो बातें मुकेश अंबानी साहब करेंगे, वो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्योंकि अगले 1.5-2 साल में किस प्रकार से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने सर्विसेज रोल आउट करेंगी, वो मार्केट को बताने का ये सही प्लेटफॉर्म रहेगा। उसके बाद टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस के बारे में अभी भी उम्मीदें हैं कि ये वैल्यू अनलॉकिंग के ट्रिगर्स है। अभी नहीं, बट एटलीस्ट नियर टर्म में क्या रोड मैप रहेगा रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस को डीमर्ज करने का, वो सुनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और सबसे बड़ी बात, कटार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने जो 1% शेयर लिया है उनके ऑयल एंड गैस के बिजनेस पे, वहां पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि शायद आपको थोड़ा सा कमेंट्री उनके ऑयल एंड गैस के बिजनेस पे भी सुनने को मिले। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मोटा मोटी कोई बड़ी पॉजिटिव कमेंट्री नहीं, जियो के बिजनेस के ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत रहेगी। उनके प्लान्स के बारे में हमको पता चलेगा। और 5G रोल आउट जो काफी समय से अभी इन प्रोसेस है, वहां पे कंपनी का क्या स्टेटस है, क्या प्लान्स कंपनी लॉन्च करने वाली, ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि मार्केट कीनली अवेट करेगा। तो मेरे ख्याल से यही सब बातें होगी। कोई और पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो मार्केट और खुश हो जाएगा। बट मेरे ख्याल से ये ब्रॉडली मार्केट की उम्मीदें हैं। अविनाश जी, वैसे आपने वो देखा है एजीएम? हाँ बिल्कुल, वो पुराने दिन में तो मुझे याद है, लोग ऐसा एजीएम कभी दिखाई नहीं देता था रजत। अभी तो डिजिटल का जमाना है, तो मेरे ख्याल से काफी लोग डिजिटल पे देखते हैं आराम से अपने घर पे, अपने ऑफिस में। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था, तो फिजिकली लोग जाते थे। एजीएम एक स्पेशल इवेंट हुआ करता था, और शेयर होल्डर बहुत टाइम पे और बहुत कोशिश करते थे कि ऐसा इवेंट वो मिस ना करे। मतलब पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था जब फुटबॉल ग्राउंड को बुक कराना पड़ा था एक एजीएम के लिए। और धीरू भाई अंबानी जिन्होंने शुरुआत की थी रिलायंस इंडस्ट्रीज में, उनके समय में ये होता था। लेकिन अब तो ऑब्वियसली डिजिटल होता है। तो सनी जी, आप के पास में आता हूँ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर इस बार? हमने ऑलरेडी देख लिया जियो फाइनेंशियल को लिस्ट होते, लेकिन अब मुद्दा ये है कि क्या रिटेल और जियो टेलीकॉम, रिलायंस जियो, इनके आईपीओ को लेकर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है क्या इस एजीएम में? गुड आफ्टरनून रजत जी। डेफिनेटली ये तो पक्का ही है कि आगे जाके इसमें से बिजनेस डीमर्ज होंगे, रिटेल बिजनेस, टेलीकॉम बिजनेस। और एट द सेम टाइम थोड़ा अगर मैं लंबा नजरिया रखता हूँ तो इनका जो रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो जो कंपनी स्केल अप कर रही है, मे बी 5 ईयर 6 ईयर डाउन द लाइन, उसमें भी एक डीमर्जर हमें देखने मिलेगा। डेफिनेटली ऑन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सबको वही लगता है कि एक जो उनका ग्रोथ प्लान है, स्ट्रेटेजी है, ये एजीएम से शायद कुछ एक हिंट मिले सभी इन्वेस्टर को। और उसमें डेफिनेटली एक सबकी नजर उस पर रहेगी। रिसेंटली लिस्ट भी हुआ है, और कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट भी रहा है कि 262 का डिस्कवर्ड प्राइस था, और अब स्टॉक कहीं 220 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो डेफिनेटली जैसे पॉजिटिव या जैसे भी कोई बिजनेस का आइडिया लगेगा, मुझे लगता है कि अब स्टॉक में यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप होना भी स्टार्ट होगा। हमने देखा कि जो ब्लास्ट सर्किट लगा था 201 202 के आसपास, तो म्यूचुअल फंड ने भी काफी बड़ी लंबी खरीदारी भी करी है। तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, इनका कोई 1 या 2 दिन का नजरिया नहीं है। डेफिनेटली 3 से 5 साल का नजरिया होता है फंड्स का। तो वो एक ट्रैक करने वाला इवेंट रहेगा। और रिटेल में अगेन जिस तरह से बीच में काफी सारी रूमर्स भी थी कि इसमें और एक राउंड ऑफ फंड रेज होगा, और एट द सेम टाइम इनका जो डेट है रिटेल बिजनेस में, उसको स्केल डाउन करके एक आईपीओ का प्लान शायद कंपनी लेकर के आएगी रिटेल को लेके। हालांकि 12 से 18 महीने दूर है ये इवेंट, तो वो भी एक काफी ट्रैक इवेंट रहेगा। और जियो टेलीकॉम के साइड डेफिनेटली 5G में अविनाश सर ने ऑलरेडी कवर किया ही है कि 5G में
डेफिनेटली इसमें एक आउटलुक कितना ऑलरेडी पेनिट्रेशन हो चुका है और कितना इनका प्लान है। एट द सेम टाइम जो लो कॉस्ट हैंडसेट का जो इन्होंने लॉन्च किया था रिलायंस ने, उसके ऊपर मे बी स्ट्रीट विल बी वेरी कीन कि किस तरह से वो लो सेट हैंडसेट से अपने जो 2G कस्टमर है या नीचे के लेवल के कस्टमर है पिरामिड में, उनको कैसे ऊपर के बैंड में शिफ्ट करे ताकि इनका आरपू बढ़ सके। और एट द सेम टाइम ऑयल एंड गैस और जो उनका जो कैश काउ बिजनेस है, उसमें आगे जाकर के ऑब्वियसली अभी भी वो बिजनेस काफी बड़ा है ओवरऑल कंपनी में, तो उसमें कई एडिशनल डिस्कवरीज और ये कुछ का उसका कोई पोटेंशियल रहेगा। और चौथा रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस, डेफिनेटली वहाँ काफी बड़ा स्कोप है। ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, सोलार हो गया, तो ये काफी एक इसमें हमें इसके चलते देखने मिलेगा अनाउंसमेंट। और डेफिनेटली ये सिर्फ रिलायंस के लिए ही नहीं है, इनफैक्ट ये इनकी जितनी भी ग्रुप कंपनीज हैं, वेदर इट इज TV18, वेदर इट इज डेन, हैथवे, स्टर्लिंग विल्सन, सभी कंपनियों के शेयर होल्डर ये EGM ट्रैक कर रहे होंगे कि अपने अपने कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट पॉजिटिव आ जाए और हमारे शेयर में पॉजिटिव मोमेंटम बन जाए यहाँ से। बहुत इंटरेस्टिंग है। दोनों ने ही जब इस एजीएम के ऊपर मैंने पूछा कि क्या बोल सकते हैं मुकेश अंबानी, तो पहले आपने फोकस किया डिजिटल कारोबार पे, रिटेल पे, टेलीकॉम पे, ऑयल एंड गैस को रखा अभी पीछे, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो ये जो नए बिजनेसेस है ना, इसके ऊपर एजीएम में फोकस खास तौर पे रहने वाला है और देखते हैं कि मुकेश अंबानी क्या अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन उससे पहले क्विक रिएक्शन स्टॉक पे भी ले लें क्योंकि निवेशक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2477 ये लेवल देखने को मिल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। विनय जी, अभी टेक्निकल चार्ट्स पे क्या लग रहा है स्टॉक, और क्या लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे ओवर अ टर्म ऑफ मिड टर्म, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्रोकिंग हाउसेस अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं सर इस शेयर को लेकर। आपका क्या आउटलुक है? सर आपकी वॉइस म्यूट है, आप उसको अनम्यूट कर दीजिए। जी। तो प्राइमरी ट्रेंड ऑफ द रिलायंस काफी बुलिश है। वो अपने 50, 100 और 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और पिछले 8 वीक से एक कंसोलिडेशन चल रहा है 150 रुपए की रेंज में। तो ऊपर की ओर 2590 और नीचे की ओर देखें तो 2420, 2400 के आसपास ये मल्टीपल बॉटम बनाने का ट्राई कर रहा है। इसकी 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 2440 के ऊपर प्लेस कर रही है। तो इसका ओवरऑल ट्रेंड, पोजिशनल ट्रेंड काफी बुलिश है और इसका ऑल टाइम हाई ज्यादा दूर भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कंसिडरिंग द प्राइमरी ट्रेंड, ये इसमें एक ओवरऑल सपोर्ट अच्छा रहना चाहिए। मार्केट में नीचे से डिमांड इमर्ज होनी चाहिए। फिलहाल लेवल्स की बात करें तो मुझे लग रहा है 2400 टू बी प्रिसाइज द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द स्टॉक लाइक रिलायंस। और जैसे ही ये शॉर्ट टर्म में 2550 के ऊपर निकलेगा तो हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बुलिश मोमेंटम। तो ये एक रेंज हमको ट्रैक करनी है 150 रुपए की, 2400 से लेके 2550 की। जैसे ही 2550 के ऊपर निकलेगा रिलायंस तो इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है। और एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशन है उसमें आपका 2400 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। तो आई एम बिट होपफुल कि ये जो ब्रेकआउट आएगा वो अपसाइड में ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड स्टॉक का बुलिश साइड का है। चलिए, बुलिश साइड पे यानी कि कोई डिप आई तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, खरीदारी होगी। लेकिन अविनाश जी आपके पास तो थोड़े समय रह गया जब मुकेश अंबानी जब भी आएंगे और एड्रेस करेंगे इस एजीएम जियो फाइनेंशियल। सबका फोकस इसी पे ही है क्योंकि निवेशकों को तो मिल गए 261 रुपए 85 पैसे पे, जो कि फेयर वैल्यू निकाली गई थी उससे एकदम से नीचे आया था 202 203 के आसपास। क्या इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए, वेट करें? किस तरीके की, किस साइज की कंपनी है सर ये? देखो रजत, पहली बात तो क्या है ना कि ऐसे शेयर्स में जो फेयर वैल्यू निकलती है वो एक होती है और दूसरा एक्चुअली जब वो शेयर लिस्ट पे आता है तभी काफी फैक्टर्स प्ले आउट होते हैं। अभी मिसाल के तौर पे जियो फाइनेंशियल का जो सेल ऑफ आया है वो ज्यादातर इसलिए आया है क्योंकि इंडेक्स बेस्ड जो फंड्स है जो बेसिकली इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं, जैसे ही स्टॉक इंडेक्स से बाहर निकलता है तो वो ये शेयर कंपल्सरी बेचते हैं। तो इसमें कोई फंडामेंटल्स का कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। तो जो सेलिंग आपने देखी कि 260 से ये 215 210 तक आ गया, अभी करीबन 215 चल रहा है। मेरे ख्याल से देखिए ये तो टाइम डिसाइड करेगा, फंडामेंटल्स आएंगे, नंबर्स आएगा, डेटा आएगा, ग्रोथ स्ट्रेटेजी आएगी, उसके बाद शेयर में आपको एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड और एक स्टेबिलिटी का ट्रेंड देखने को मिलेगा। तब तक ये ऊपर नीचे का सिलसिला चलता रहेगा। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, शायद आपने भी देखी होगी कि पिछले 2-3 दिनों के पहले, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही मोतीलाल ओसवाल ने बहुत बड़ी क्वांटिटी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे खरीदी है। देखिए 0.6%। अगर आपका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का है और हम ये सोच के लेते हैं कि रिलायंस जो भी धंधे में आता है वो नंबर 1 करने की कोशिश करता है, तो जिस प्रकार की बैलेंस शीट की साइज है 1,60,000 करोड़, जिस प्रकार से इनका ब्लैक रॉक के साथ एएमसी के साथ करार हो गया है, मुझे लग रहा है वो कोई भी बिजनेस अभी इसमें इस वर्टिकल में छोड़ेंगे नहीं।
और अगले 1.5-2 साल में कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल सर्विसेज में ये नंबर 1 बने। हालांकि ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन जो दूसरे खिलाड़ी है जैसे बजाज फाइनेंस है, पूनावाला फाइनेंस है, यहाँ पे काफी लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे जो लेगरूम है मेरे ख्याल से पार्टिसिपेशन के लिए वो काफी बड़ी है। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, वही मेरे ख्याल से अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहेगी। सनी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी रजत जी, या सर, ये जैसे अभी मैंने जियो फाइनेंशियल के ऊपर पूछा अविनाश जी से, मेरा सवाल फिर से रिटेल और साथ ही साथ टेलीकॉम, जियो टेलीकॉम के ऊपर भी होगा। सर, किस साइज का स्केल है, जरा निवेशकों को समझाएं, क्योंकि 19 लाख करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप रिलायंस इंडस्ट्रीज की है, वो तो हमें पता है, लेकिन ये जो हम आईपीओ के बारे में बार बार बात करते हैं, रिटेल और साथ साथ जियो फाइनेंशियल, अगर ये लिस्ट हो गई तो किस अमाउंट की वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है? रिलायंस के पिटारे में ऐसा है क्या? जियो फाइनेंशियल, रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल का स्केल कितना है? कितनी बड़ी कंपनियां हैं, बन सकती या है गोइंग फॉरवर्ड? डेफिनेटली रजत जी, स्केल काफी बड़ा हो सकता है। रिसेंटली जो कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की जो डील हुई थी 1% की, उसमें जो रिलायंस रिटेल का जो वैल्यूएशन निकल करके आता है, अगर मैं 1% के लिए 8,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट थी, तो मोटा मोटी ये हो गया आपका $100 बिलियन की वैल्यू हो गई। मतलब 8 लाख करोड़ की तो वैल्यू सिर्फ रिटेल बिजनेस की हो गई। दैट इज बेस्ड ऑन द ये जो रिसेंट डील हुई है। और ये मतलब 19 लाख करोड़ रिलायंस इंडस्ट्रीज का, 8 लाख करोड़ अभी रिलायंस रिटेल को मिल रहे हैं, इसका रिटेल का कुछ अभी। वैल्यूएशन है। और ये वैल्यूएशन डबल रेट पे हुई थी, अगर मुझे याद है FY 2021 में जो फंड रेज हुआ था उसके डबल वैल्यूएशन पे हुई है। तो 2 साल में तो वैल्यूएशन रिटेल बिजनेस की डबल हो गई है, राइट। और अब यहाँ से जाकर के अगर मैं मानता हूँ कि और एक नेक्स्ट राउंड ऑफ फंड रेज होगा, तो उसका फंड रेज डेफिनेटली, हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि कोई जब बड़ा फंड इन्वेस्ट करता है कोई कंपनी में, तो जो नेक्स्ट फंड रेज होता है या तो उसके ऊपर के वैल्यू पे होता है या सेम वैल्यू पे होता है, वो यूजुअली नीचे के वैल्यू पे नहीं होगा, स्पेशली इन ग्रोइंग बिजनेस लाइक रिटेल। तो मुझे लगता है कि अब इसमें जब और एक प्राइवेट इक्विटी या कोई दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा अगले 6 से 12 महीने में, वो फिर ऊंचे वैल्यूएशन पे आएगा, सेम वैल्यूएशन में पे आएगा। और फिर उसके बाद जब आईपीओ आएगा, तो तब वो देखने वाली बात रहेगी। डेफिनेटली वैल्यू यहाँ से बढ़ना ही है, क्योंकि जो रिलायंस रिटेल का अगर आप नंबर भी देखेंगे, क्वार्टरली नंबर, हर क्वार्टर में हमें इंप्रूवमेंट देखने मिलता है। दे आर एक्सपेंडिंग एवरी नुक्स एंड कॉर्नर, और ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें रिलायंस रिटेल अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन यहाँ से, इनफैक्ट अब एक बार जिस तरह से जियो फाइनेंशियल अलग हो गया, ग्रेजुअली अब रिटेल के लिए एक्साइटमेंट बढ़ेगी और वैल्यूएशन ओवरऑल कंपनी के लिए भी बढ़ते ही रहेगा। अच्छा, अब इसके नंबर्स आ रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा तो परफॉर्मेंस हमने नहीं देखा इनके कोर कारोबार में, जो कि ऑयल केमिकल जो कारोबार है उसमें इनका जो मेन फोकस एरिया है वो ऑब्वियसली अब डिजिटल और रिटेल के ऊपर ज़्यादा चला गया है। लेकिन ये जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ये भी आप यही समझ रहे हो कि न्यू एनर्जी जैसे कि हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी, और इसके अलावा रिटेल, टेलीकॉम, यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करता हुआ नजर आएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज बजाय के अपने कोर कारोबार में? पड़े, बट कहीं ना कहीं देखिए ये इन्वेस्टमेंट्स बड़े हैं। जैसे जैसे ये इन्वेस्टमेंट्स फ्रक्टिफाई होंगे, इनसे रेवेन्यू आ जाएगा, मार्केट इन बिजनेसेस को भी बहुत क्लोजली वॉच करेगी। और ऑयल एंड गैस के बिजनेस में मुझे नहीं लगता कोई बड़ा निवेश अभी वापस रिलायंस करने की कोशिश करेगा। वो नए इमर्जिंग जो सेगमेंट्स है जैसे टेलीकॉम हो गया, रिटेल हो गया, डिजिटल हो गया, यहाँ पे भी पैसा लगाएगा। प्लस ग्रीन एनर्जी का जो फोकस है, तो मेरे ख्याल से देखिए कैश फ्लो तो ऑब्वियसली ऑयल एंड गैस बिजनेस अच्छा जनरेट कर रहा है। वो कैश फ्लो वो नए सेक्टर्स में डालने की कोशिश करेगा जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल काफी बढ़िया है। और यही चीज मार्केट को भी पसंद आ रही है, क्योंकि अगले 2-3 साल में होपफुली टेलीकॉम का भी आईपीओ आने वाला है, रिटेल का भी बिजनेस का भी अनलॉकिंग आने वाली है। तो यही से ग्रोथ रिलायंस का आएगा। इन द नियर टर्म ये जो आप कंसोलिडेटेड नंबर्स देख रहे हो और आप बता रहे हो कि कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नंबर्स में नहीं आया, ये तो काफी स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए कंसोलिडेटेड एंटिटी में इनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा ओवर शेडो होता है। एक बार कंपनी सेपरेट आती है तो आपको शायद और थोड़ी रीरेटिंग इन सेपरेट कंपनीज में देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से देखिए वी हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम, बट डेफिनेटली अगले 2-3 साल रिलायंस के लिए काफी बढ़िया रहेंगे, प्योरली फ्रॉम वैल्यू अनलॉकिंग ऑब्जेक्ट।
देखिए मार्केट भी इस तरह सेलिब्रेट कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम को। हाँ, एजीएम अभी शुरू होने ही वाली है, बस मुकेश अंबानी जी अभी बस एड्रेस पहले निफ्टी जो 100 पॉइंट ऊपर आ चुका है, एकदम से अचानक से खरीदारी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के बलबूते थी। वहां तो हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है 2480 के लेवल पे है, लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं जियो फाइनेंशियल तेज है, 4.5% ऊपर हो गया है ये। अभी विनय जी ओवरऑल मार्केट का सेटअप कैसा लग रहा है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज किस लेवल के ऊपर अगर निकला तो वो निवेशकों के लिए शॉर्ट टर्म में बहुत बेहतरीन एक पिक हो जाएगा? तो पहले तो मैं रिलायंस इंडस्ट्री का जो रेजिस्टेंस है by offering to our customers products and services of the highest quality at prices amongst the lowest in the world. This can be seen from the fact Reliance's businesses and philanthropic initiatives have enhanced the quality of life as well as the ease of living of hundreds of millions of Indians. We have shown impeccable execution capabilities by consistently delivering on all our plans. This can be seen from the fact that Reliance has executed its projects, however big, complex, and difficult, well before time and at lower costs than global benchmark. The best way to describe this new Reliance is that we have now become a new age technology company with distinctive capabilities. Today, we are a producer of technology, a large-scale deployer of technology, as well as a democratizer of technology. Friends, these achievements are a testament to our faith in India, to the unlimited India opportunity, and to the boundless Indian talent. What is true about Reliance is equally true about scores of other Indian enterprises, leading corporates as well as startups. I hugely admire their brilliant achievements. They too have made India proud by enhancing our nation's fame globally with their spectacular growth, commitment to quality, and passion for innovation. Now it is the time for all of us in the business community to work together as a grand coalition to transform India into a fully developed nation by 2047, a prosperous India in which no Indian and no region will be left behind. Dear friends, I am delighted to report yet another year of stellar all-around performance. Reliance's consolidated revenues stood at 9,74,864 crores. Reliance's EBITDA for the financial year 23 was 1,53,920 crores, while the net profit was rupees 73,670 crores. Dear shareholders, Reliance's export for the year jumped 33.4% to 3.4 lakh crores. We accounted for over 9.3% of India's merchandise exports, up from 8.4% last year. In the financial year 23, Reliance's contribution to the national exchequer stood at rupees 1,77,173 crores. This included an increase in direct and indirect taxes of over 16,639 crores. Reliance also made the highest corporate social responsibility spending of rupees 1,271 crores. What gives me immense satisfaction is our contribution to employment creation, which is India's #1 necessity. Reliance set new records in creating employment for Indians with the addition of 2.6 lakh jobs across all our businesses during the year. The total number of our on-roll employees is nearly 3.9 lakhs. The number of indirect livelihood opportunities we have created is many times larger. In a sense, Reliance maintained its leading position in terms of revenues, profits, exports, market value, capital expenditure, employment generation, contribution to the exchequer, as well as social responsibility, spending, and impact. Dear shareholders, let me now present to you the performance of each of our businesses. I shall start with Jio, our digital services business. We have witnessed another year of outstanding growth, posting an all-time high revenue of rupees
1,19,791 crores and an EBITDA of rupees 50,286 crores. Jio's overall customer base has now crossed the milestone of 450 million subscribers, reflecting a year-on-year revenue growth of over 20%. Per user data consumption on Jio's network also has surged, with the average user now consuming over 25 GB every month. This translates to a monthly data traffic of 1,100 crore GBs, representing a 45% year-on-year growth. My congratulations to the entire Jio team for this exceptional achievement. Dear friends, Jio was launched 7 years ago with an ambitious mission to transform India into a premier digital society, where technology would bring positive change in every sphere of our lives and in every sector of the nation's economy. It has been our great privilege to contribute to this revolution, and we have invested our heart and soul into building a digital public infrastructure the entire world is beginning to admire. Jio has indeed been the main catalyst of New India's spectacular digital transformation. Now our ambitions are even higher, and they go beyond the shores of India, as I shall explain. Let's first discuss Jio's True 5G, our pioneering 5G broadband offering. We began our 5G rollout last October. In just 9 months, Jio 5G is already present in over 96% of the census towns of our country, and we are on track to cover the entire country by December of this year. This makes Jio 5G the fastest ever 5G rollout of this scale anywhere in the world. Today, nearly 85% of the total 5G cells operational in India are in Jio's network. At our current pace, we are adding one 5G cell to our network every 10 seconds, and we will have nearly 1 million 5G cells operational in our network by December. With this massive reach and capacity, here is our promise. We know that every home, small and medium businesses, factories, schools, colleges, and hospitals across India would like to have 5G. From December of this year, we will be able to promptly fulfill each and every demand for Jio 5G broadband connection across the country. Last year, I highlighted several advantages that differentiate Jio 5G from other operators, including our comprehensive spectrum, our standalone 5G architecture, and carrier aggregation. Recently, we used our own 5G stack to become the first operator in the world to launch commercial services on millimeter wave spectrum using standalone 5G. This high capacity, low latency layer will significantly enhance private 5G, home broadband, and enterprise use cases. We have also built our own low power small cells to go deeper into specific pockets of high consumption like tourist spots and temples in a highly energy efficient manner. These advantages, along with a massive scale of deployment, means that the best 5G coverage, capacity, and experience is possible only with Jio 5G. Friends, with over 50 million 5G customers, we are already leading in 5G adoption in India. And we are the only company with the capacity to smoothly transition our entire 4G customer base to 5G with minimum additional capital expenditure. With the growing adoption of Jio 5G, we are also seeing an increasing trend of high ARPU, postpaid customers choosing Jio as their preferred network.
and Jio is the operator of choice for mobile users. Our net port-ins via mobile number portability was 5 times than that of our nearest competitor. We truly appreciate the confidence placed in us by our customers. We are inspired by their trust to reach a new gold standard of excellence in customer service by leveraging AI and cutting-edge CRM tools. Friends, Jio is also the only company that offers its 5G customers the complete ecosystem of connectivity, devices, support services, and value-added services. Through Reliance Retail, we have the most expansive sales and support network for 5G devices and services across India. And we have plugged all leading 5G smartphone OEMs into this network to ensure nationwide availability and adoption of the widest range of 5G devices. Taken together, this comprehensive ecosystem makes Jio the prime mover and the undisputed leader in India's 5G revolution. Friends, there is one important aspect of the Jio journey that I'm especially proud of, and that is how we have transformed ourselves from a mere implementer to original creators of cutting-edge new technologies. When we launched our 4G services in 2016, we relied on global partners for equipment. Today, our 5G rollout is powered by Jio's own 100% in-house developed 5G stack, which aligns perfectly with our Prime Minister's Atmanirbhar vision. It features advanced technologies like standalone 5G architecture, carrier aggregation, and network slicing with advanced artificial intelligence and machine learning capabilities that optimize our vast network for unparalleled quality, reliability, and user experience. And it is designed to seamlessly integrate with the 4G and the 5G equipment from other global vendors. Jio's own portfolio of 5G radios range from small cells to large tower-based radios, addressing the entire spectrum of outdoor and indoor usage scenarios. And our focus on continuous innovation has positioned us to be among the first globally to develop 6G capabilities. In fact, we have become one of the largest filers of global patents from India for digital technologies, affirming our transformation from a telecom operator to a technology company. Therefore, in the coming years, I can see Jio leveraging our Made in India tech stack to drive value creation and revenue growth both at home and abroad. Dear shareholders, as India embraces 5G, let's not forget those who still await their chance to join the digital revolution. Even today, 250 million feature phone users in India remain stuck in the 2G era, unable to access digital services. To eliminate this digital divide in India once and for all, we have recently launched Jio Bharat, a revolutionary, ultra-affordable 4G phone, priced only at Rs 999, which is less than the price of a 2G feature phone. Jio Bharat has smartphone-like features like live TV, streaming video, music, digital photography, and even UPI payments. We expect a bulk of 2G users to join our network. Let's now discuss Jio Fiber, our optic fiber-based home broadband service. In a few short years, despite COVID-19 disruptions, Jio Fiber has crossed 10 million subscribers, each of whom consumes, on an average, over 280 GB of data monthly, which is over 10 times higher than
the per capita mobile data consumption. Today, Jio's optical fiber infrastructure spans over 1.5 million kilometers across India. This immense scale puts us in a league of our own, far ahead of competition. Our extensive optic fiber presence puts us in close proximity to over 200 million premises across India. Yet, providing physical last-mile connectivity is a painstaking process in most parts of our country. This leaves millions of potential customers without home broadband due to the complexities and delays involved in extending optical fiber to their premises. This is where Jio Air Fiber, our fixed wireless broadband offering, comes in. Jio Air Fiber uses our pan-India 5G network and advanced wireless technologies to bypass the need for last-mile fiber. Through optical fiber, we can currently connect around 15,000 premises daily. But with Jio Air Fiber, we can supercharge this expansion with up to 150,000 connections per day. This is a tenfold increase, expanding our addressable market over the next 3 years to over 200 million high-paying homes and premises. And through fixed mobile convergence, we can foster greater engagement and loyalty among Indian households, especially premium households, where home broadband usage is growing the fastest. This also lays the foundation for widespread adoption of various smart home solutions, which Akash and Kiran will describe in their demo section. Today, I am delighted to announce that Jio Air Fiber will launch on the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi on 19th September, giving us another avenue for customer value and revenue growth in the untapped Indian home segment. Let's now turn to Jio's business services. Our connectivity offerings for large enterprises and small businesses have doubled over the past year. Today, Jio provides connectivity services to over 80% of large enterprises in India. However, the potential in the enterprise sector, and especially within the small and medium business segment, is far greater than we have yet realized. Historically, enterprise services account for a large proportion of most telecom operators' revenues. This suggests that we have a golden opportunity to rapidly catch up and build an enterprise connectivity business that mirrors the scale of our consumer business. But we are not stopping at connectivity. We are also aiming to support the full spectrum of digital needs for Indian business. Jio Platforms, our digital services arm, is already providing an end-to-end professional and managed services for all businesses of the Reliance Group, covering diverse verticals such as telecom, retail, e-commerce, manufacturing, media, and financial services. These technology-enabled services allow our group businesses to streamline their operations, scale seamlessly, and harness the power of real-time data and AI, giving them a significant competitive advantage in their respective markets. I believe Jio Platforms is now ideally placed to offer these innovative platforms, services, and managed services to businesses outside the Reliance Group, both in India and abroad. This represents yet another powerful driver of growth for both Jio Connectivity and Jio Platforms. Friends, let us now consider what the rapid scale-up of Jio 5G means for our nation as a whole. Jio 5G holds the potential to transform all sectors of our economy, especially those with maximum grassroots impact. In agriculture, real-time monitoring and data analysis can enhance farm productivity and crop yields. In education,
we can deliver immersive e-learning experiences to the remotest parts of our country, democratizing education for every student. In healthcare, we can use telemedicine to ensure that quality healthcare reaches every corner of India. For the MSME sector, we can enable our small businesses with digital tools, empowering them to innovate, expand, and drive economic growth and job creation. With Jio 5G, we are renewing our promise to build a brighter and more inclusive digital future for every Indian. With that, let me invite Akash and Kiran on stage to talk about some of the exciting developments at Jio. Good afternoon, everyone. I'm Akash Ambani. And I'm Kiran Thomas. We're excited to showcase Jio at the Reliance Annual General Meeting 2023 and take you through our plans for the year to come. Over the past 7 years, Jio has revolutionized India's digital landscape. Over this period, we've become a trusted provider of an end-to-end suite of digital solutions for every Indian home, offering unrivaled convenience, affordability, and customer experience. More than 80% of data consumption in India happens indoors, and through our home offerings, we meet our customers where they consume most of their data. Today, I'm thrilled to introduce Jio Smart Home Services, which is poised to redefine how we experience and manage our homes. Jio Smart Home is anchored by our robust and extensive home broadband offerings. Our extensive Jio Fiber service already serves over 10 million customers, with hundreds of thousands more getting connected each month. And now with Jio Air Fiber, we are expanding our addressable market to over 200 million homes and other premises. Jio Air Fiber is an aspirational service that will touch the lives of every Indian, becoming an integral part of every Indian household. Through a combination of Jio Fiber and Jio Air Fiber, our turnaround time to fulfill a customer order is among the fastest in the world. From the comfort of your homes, you can share your home address through Jio.com or the MyJio app. From that point, we step in as your trusted partner, delivering not only broadband to your doorstep, but also guaranteeing uninterrupted Wi-Fi throughout your entire home. And we won't stop there. We'll also guide you step by step to transform your home into a Jio Smart Home. Over to you, Akash. Thanks, Kiran. Jio Smart Home Services provide you with multiple services for simplifying, enriching, and securing your life within your home. Let's start with the foundation inside your home, your Wi-Fi network. Our next generation Jio Home Router ensures seamless Wi-Fi coverage within your home. And with Jio Home smartphone app, you can easily manage your home network. You can set parental controls, strengthen network security, troubleshoot issues, and even receive suggestions for Wi-Fi extenders if parts of your home have poor Wi-Fi coverage. Our AI-driven proactive quality monitoring feature automatically optimizes your Wi-Fi based on your usage patterns and prevents most issues even before they occur. We're not just fixing problems, we're preempting them. We're also committed to digital security, and we prevent untrusted traffic from entering your home network. And using the Jio Home app, you can easily manage, grant, or restrict Wi-Fi access both for the people in the home and also for visitors. Next is the Jio set-top box. The Jio set-top box is your gateway to a world of entertainment, from TV channels to immersive streaming content to large-screen games to digital applications and much more. And the Jio Smart Home app includes an e-remote for your Jio set-top box, giving you one more convenient option alongside the traditional physical remote control. Plus, it lets you use your smartphone as a gamepad for your set-top box, removing the need for a separate game controller. Entertainment is changing rapidly worldwide, shifting from linear to interactive content. Jio is accelerating this trend in India, revolutionizing how you engage with content. Our set-top box supports Jio apps like Jio Cinema, Jio TV Plus, along with leading global and Indian streaming apps. And earlier this year, Jio Cinema, our premier entertainment app, captivated cricket fans with a remarkable IPL viewing experience. Jio Cinema transformed the way we engage with live content,
with path-breaking innovations like true 4K streams, 360-degree streams, multi-camera views, and fan interaction through our Hype feature. The response was incredible, setting multiple records for streaming content. Over 3.2 crore concurrent users during the IPL final, with more than 12 crore total viewers, and 60 minutes average watch time per viewer per match. Beyond the numbers, JioCinema offers a wide-ranging freemium video library and is soon introducing even more features like multi-video picture-in-picture and multilingual support for Indian languages. Next, let's look at a few of the other features of the JioHome app. JioHome reimagines how you access your personal content, keeping your family photos and other media right at your fingertips, whether they are stored on your personal devices or in the cloud. With JioHome's Photos feature, you can access your cherished memories anywhere, anytime. A smart home also needs smart automation. JioHome Smart Automation integrates seamlessly with your home devices for safety, security, and convenience. JioHome also works in conjunction with Jio's home security cameras, providing complete surveillance within and outside your home. Through this setup, you get live video feeds, prompt alerts, and recorded event clips for complete security and peace of mind. Finally, Jio Smart Home is an entire ecosystem. Imagine a seamlessly connected home where multiple devices and digital services work harmoniously. Jio Smart Home makes this possible. And this opens up a world of possibilities. With Jio Home Broadband's ultra-low latency and service awareness, real-time applications like large-screen multiplayer cloud gaming becomes accessible in every Indian home. The next generation of internet-connected devices will be able to seamlessly integrate in-home computing with cloud and edge computing, allowing services like Jio Cloud PC to revolutionize both affordability and performance. For this, we are working very closely with our partners, HP and Google. This expands the reach of innovative digital solutions, ranging from entertainment to health, to education, to finance, and much more. For businesses, both large and small, this provides a seamless, secure, and robust solution that supports their workforce no matter where they are, in the office, at a remote site, or working from home. This enhances productivity and collaboration and redefines what's possible in the era of digital work. Jio Smart Home transforms your living space into an intelligent, secure, and convenient haven. It simplifies and enriches every moment of your life with technology. Welcome to the future of smart living with Jio Smart Home. Thank you, Kiran. Let's now talk about digital inclusion. We're at a pivotal moment in India's digital transformation with 5G technology. Yet, 25 crore of our citizens are still constrained to using 2G services. In recent years, this digital divide has increased further, with other operators continuing to increase the prices for even basic 2G services. Against this backdrop, we present Jio Bharat, a pioneering initiative that reimagines digital inclusion. Jio has consistently championed technology democratization and is bridging the digital divide. With Jio Bharat, we are taking another decisive stride in this direction, extending the benefits of digital services to every Indian. Jio Bharat is a gateway to digital independence for those who can't afford smartphones. Although it is priced comparably to 2G feature phones, Jio Bharat is a 4G-enabled phone with access to streaming content via JioCinema, music streaming on JioSaavn, a powerful digital camera, built-in FM radio, and will support Jio TV with over 450 TV channels. And Jio Bharat also supports UPI payments. With Jio Bharat, even the most disadvantaged can now go cashless. It revolutionizes financial access, making transactions smooth and easy. Also, small merchants can now accept UPI payments through Jio Bharat.
transforming grassroots commerce and empowering small businesses. Further, Jio Bharat's UPI integration streamlines direct benefit transfer from the government, enabling citizens to receive government support directly with easy balance checks and real-time notifications through UPI. Jio Bharat also comes with affordable, value-packed tariff plans. Our rupees 123 monthly plan includes unlimited voice and 14 gigabytes of data, 30% cheaper than similar plans from other operators. Yet another interesting aspect of Jio Bharat is the ecosystem we are creating around it. To accelerate our mission to create a 2G Mukt Bharat, we are opening up both the operating system and the platform we developed for Jio Bharat to other like-minded partners. In addition to Reliance, now brands like Carbon are also creating Jio Bharat phones. We are confident that the vibrant device ecosystem created by Jio Bharat will enrich the everyday life of all Indians with greater financial inclusion, education, and government services. Finally, we want to share a glimpse of the digital ecosystem that Jio True 5G is looking to create in India. We're building a transformative platform that will change how Indian enterprises, small businesses, and technology startups interact with the digital world. Today, we're announcing the Jio True 5G Developer Platform, a comprehensive platform combining our 5G network, edge computing, and a spectrum of applications and services. It gives enterprises the control and options to activate network slices on demand, deploy application on Jio's multi-access edge compute locations, and access a diverse ecosystem of partner applications, all within a single platform. This fusion of 5G network, edge computing, and service orchestration is transformative for Indian businesses. Jio True 5G Developer Platform enables secure, quick deployment of 5G edge compute and low latency applications, enabling faster, autonomous decisions, immersive experiences, and real-time edge AI. Enterprises can instantly unlock advanced network slicing capabilities, allowing them to independently establish and optimize network slices with regularity, thus enhancing their network resource management. This accelerates innovation, improves time to market, and reduces cost. Plus, our platform offers access to partner solutions, empowering enterprises to effectively deliver 5G use cases. And through the Jio True 5G marketplace, our partners can integrate their offerings and develop tailored solutions that cater to specific needs. Today, we're also announcing the Jio True 5G Lab, a facility designed to accelerate industry transformation using Jio True 5G. In this facility, our technology partners and enterprise customers can develop, test, and co-create multiple industry-specific solutions. The inaugural Jio True 5G Lab will be located at Reliance Corporate Park, acting as a nerve center for shaping India's 5G future. And with that, let's invite our chairman back on stage. Thank you, Akash and Kiran. Dear shareholders, as I gaze ahead, I see 4 exciting frontiers for Jio's growth. 1, the consumer segment powered by Jio 5G and Jio Bharat. 2, the home segment turbocharged by Jio Air Fiber. 3, the business segment with its large untapped potential. And 4, the Jio platform's opportunity for global expansion. Collectively, these frontiers provide Jio an opportunity for a multifold revenue and EBITDA growth in the coming years. But there is also a 5th and most exciting frontier of growth for Jio. A global artificial intelligence revolution is reshaping the world around us. And sooner than we think, intelligent applications will redefine and revolutionize industries, economies, and even our daily life. To stay globally competitive, India must harness
artificial intelligence for innovation, growth, and national prosperity. Within the RIL group, we are rapidly augmenting our talent pool and capabilities to swiftly assimilate the latest global innovations in AI, especially the recent advances in generative artificial intelligence. Looking ahead, Jio Platforms wants to lead the effort in developing India-specific artificial intelligence models and AI-powered solutions across domains, thereby delivering the benefit of artificial intelligence to Indian citizens, businesses, and government alike. India has the scale, India has the data, India has the talent. But we also need AI-ready digital infrastructure that can handle artificial intelligence immense computational demands. As this sector expands, we stand committed to create up to 2,000 megawatts of AI-ready computing capacity across both cloud and edge locations. And we will do this while adopting sustainable practices and a greener future. Over the next 5 years, we plan to shift most of our energy footprint in connectivity and digital services to green energy, which is not just eco-friendly, but also lower cost. Here is my promise to our countrymen. 7 years ago, Jio promised broadband connectivity to everyone, everywhere. We have delivered. Today, Jio promises AI to everyone, everywhere, and we shall deliver. My dear share owners, let me now highlight our media and entertainment businesses, which created huge disruption last year with Jio Cinema leading the way. For the first time, IPL was streamed free on Jio Cinema. It created a global record with a staggering 45 crore viewers tuning in to the platform. More people watched IPL on digital devices than on linear television, marking a tectonic shift in the way content is consumed in India. More than 12 crore people watched the IPL final with a peak concurrency of 3.2 crores, making it the most watched digital event globally. Meanwhile, JioDive, our AR/VR device, has revolutionized sports viewing in India. It gives the feel of a stadium-like experience through 360-degree viewing from anywhere, any place. Jio Cinema has now become India's largest digital entertainment destination for blockbuster movies, OTT originals, the biggest reality shows, and exclusive content from leading global studios like HBO and NBCU. In short, Jio Cinema delivered industry-leading engagement metrics, registering strong growth in paid subscribers. Network 18, too, made great progress in its journey to becoming the top news network in India. It is going deeper locally and growing wider with international coverage. Our homegrown digital news platform, Money Control and First Post are setting new benchmarks globally. Dear shareholders, please join me in congratulating the leadership team of Reliance Retail for bettering their own record with spectacular performance last year. Reliance Retail posted annual revenue of rupees 2,60,364 crores, registering a year-on-year growth of 30%. We delivered an EBITDA of 17,928 crores and a net profit of 9,181 crores. Reliance Retail is the only Indian retailer in the global top 100 and one of the fastest growing retailers in the world. Over the past few years, it has attracted investments from large and reputable global investment firms and sovereign wealth funds, owing to its rock-solid fundamentals and compelling value proposition. I am delighted to welcome yet another world-renowned sovereign wealth fund, the Qatar Investment Authority,
as a valued investor in Reliance Retail with an investment of $1 billion for a 1% equity stake. This investment values Reliance Retail at pre-money equity value of rupees 8,28,000 crores. Just for context, during our fundraise in September 2020, the valuation of our retail business stood at 4,28,000 crores. In less than 3 years, the valuation of retail has almost doubled, notwithstanding the intervening COVID-19 pandemic. Based on this valuation, Reliance Retail, had it been listed, would have ranked among the top 4 companies in India and the top 10 retailers globally. The pace of this value creation is unmatched globally. It is a testament to our unwavering commitment to quality, innovation, customer centricity, and adaptability. Through strategic investments, digital transformation, and relentless focus on delivering exceptional experiences, we continue to earn the trust and love of our customers. Allow me to add that several marquee global strategic and financial investors have shown strong interest in Reliance Retail. I will update you about our progress with them in due course. I now invite Isha to report on the progress of our retail business. Thank you, Chairman. Dear shareholders, financial year 23 has been a landmark year for our retail business. Our immense faith and conviction in India's retail story was amply rewarded when Reliance Retail crossed the milestone of 100 crore transactions, up 42% year-on-year. Our stores received more than 78 crore footfalls during the year, and the number of registered customer base grew to nearly 25 crore. We're delivering value to over 30% of India's addressable population. All this has made Reliance Retail rank among the top 10 most visited retailers in the world. Our digital and new commerce sales contributed to nearly 50,000 crore rupees, accounting for about a fifth of our revenues. We've invested over $10 billion in the past 2 years, focusing on building integration, growing our in-house brands, and improving our supply chain networks. We opened over 3,300 new stores last year, taking the total store count to over 18,000 stores, covering nearly 6.5 crore square foot of retail space. 2/3 of these stores are in small towns, tier 2 and tier 3 cities, which is a testament to our commitment of making retail inclusive. Dear friends, we have built our retail business on the principle of 4 C's: collaboration, consumer engagement, creativity, and care. First, collaboration. We have partnered with lakhs of small producers, manufacturers, and merchants, making them self-reliant and competitive through our digitally enabled supply chain. Last year, we reached the milestone of partnering with over 30 lakh merchants. The acquisition of Metro Cash and Carry has further bolstered our value proposition for merchants. Second, consumer engagement. We believe that Indian consumers deserve nothing but the best. We continue to deepen our engagement with our existing customers and continue our foray into new geographies. Reliance Retail currently serves over 98% of India's PIN codes through integrated online and offline channels. Third, creativity. We spend time in understanding what our customers want, and accordingly, we create and innovate new products, formats, and platforms to serve them better. For example, we recently launched Tira, our omni-channel beauty platform. It focuses on providing experiential retail services, technology-enabled personalization, and content all at once. Fourth, care. Staying true to Reliance's We Care philosophy, we consider our retail business a success only when it leads to shared prosperity. With the benefits of reaching hundreds of millions of consumers
merchants, and other stakeholders. For example, our collaboration with Kirana merchants is guided by the promise, "Customer Aapka, Support Hamara." This has resulted in the average annual income of JioMart Smart Kirana partners increasing by up to 25%. Today, Reliance Retail is one of the largest employers in the country, with nearly 2.5 lakh on-roll employees. Additionally, we generate indirect employment for lakhs of Indians across multiple value streams. We will continue to play a pivotal role in creating employment opportunities for the aspirational Indian youth. Our We Care philosophy also extends to the environment and our planet. Our businesses have embraced sustainability through green buildings, sustainable products, transition to renewable resources, and other eco-friendly initiatives such as recycle and reuse. Dear friends, from staples, food, fashion, and FMCG to home, personal care, and general merchandise, Reliance Retail caters to more than 90% daily needs of Indian households. In our grocery business, we sold over 18 lakh metric tons of groceries during the past year. In our consumer electronics business, we sold nearly 5 lakh laptops and over 23 lakh appliances during the year. In our fashion and lifestyle businesses, we sold a record-breaking 50 crore garments in the year. We have democratized fashion in India, catering to customers across segments. Trends and Trends extension formats consolidated their position as India's largest fashion destination. Ajio had yet another strong year with its catalog size crossing 13 lakh options, making it a one-stop shop for all fashion needs. We continue to be the partner of choice for international brands straddling across premium, bridge to luxury, as well as Indian designer wear. Dear friends, we announced the launch of our FMCG business in last year's AGM with a vision to provide Indian consumers with world-class products at affordable prices. This business made a strong start by entering several categories through multiple brands and strategic partnerships. A key pillar of our FMCG business is to make heritage Indian brands contemporary for today's Indian consumers, keeping the age-old brand promise intact. We have acquired and partnered with several such brands like Campa Cola, Socio, and Lotus. We have launched Campa Cola with the promise of great Indian taste, and consumers have embraced it wholeheartedly. We're scaling it up further in India and have also started work to take it global, starting with Asia and then Africa. We have partnered with General Mills for bugles and Malaban for biscuits. These will be our rich and premium offerings to discerning Indian consumers. The new commerce business grew phenomenally on the back of our omni-channel capabilities. Trends, Hamleys, and Urban Ladder are now live in our cross-category horizontal platform, JioMart, which is seeing a sustained uptick in non-grocery category contribution. The launch of JioMart on WhatsApp has been a phenomenal success. There has been a 9x growth of JioMart consumers on WhatsApp since its launch in 2022. Our wide bouquet of brands and formats ensure that our offerings are complete, competitive, and in line with the evolving choices and aspirations of our consumers. Dear friends, the value created by our retail business has been immense for all our stakeholders. Here, I would like to underscore Reliance's deep commitment to India's inclusive development by harnessing the limitless intangible wealth that resides at the bottom of our social pyramid. Let me give you some specific examples. JioMart has onboarded over 25,000 artisans, weavers, and micro-entrepreneurs, providing them support to modernize their processes, improve productivity, and help them grow their businesses. Over 1.5 lakh products of artisans representing more than 150 cities across 24 states are available on our platforms. Many of these products are made by a highly skilled tribal craftsmen.
we are determined to increase their participation further in the coming years. We are promoting development of local craft to preserve and propagate the rich legacy of Indian art forms. Our sari store formats of Avantara and Kalaniketan are working with more than 2,500 handloom weavers covering around 50 craft clusters across 15 states. We remain resolute in our vision to play the role of a facilitator across all aspects of retail commerce in India and work with merchants across the country so that the entire society benefits. Together, we hope to continue to exceed expectations, inspire creativity, and bring joy to our customers. This is our promise. Thank you, Isha. That was truly inspiring, especially your emphasis on India's inclusive development. I am confident that as India grows from a $2,500 per capita economy to a $10,000 per capita economy, Reliance Retail will be our fastest growing business in revenues and EBITDA. Dear shareholders, I am delighted to introduce our newest group company, Jio Financial Services Limited, of which all of you are proud shareholders. Every shareholder of Reliance has received shares in JFS on a 1:1 basis following the recent demerger of the financial services business. This is equivalent to a mini bonus for our long-term investors. JFS has been conceptualized to fill a critical gap in the financial services needs of a large section of the Indian economy, mainly in the informal and the underserved sectors in rural, semi-urban and urban areas. This will give a big boost to inclusive and accelerated growth of the economy. In other words, JFS is born to accelerate the replication of India's dazzling growth story in Bharat. JFS will massively increase financial service penetration by transforming and modernizing them with a digital-first approach that simplifies financial products, reduces cost of services, and expands reach to every citizen through easily accessible digital channels. For tens of thousands of small and medium enterprises, merchants, and self-employed entrepreneurs, ease of doing business must mean ease in borrowing, investments, and payment solutions. JFS plans to democratize financial services for 1.42 billion Indians, giving them access to simple, affordable, innovative, and intuitive product and services. Dear shareholders, JFS has announced a joint venture with BlackRock to set up an asset management business that will provide simple and trustworthy investment solutions in our country. BlackRock is the world's largest asset management company, managing assets worth over $11 trillion with a stellar reputation and track record. The joint venture will synergize the respective strength of JFS and BlackRock to deliver technology-enabled, affordable, and innovative investment solutions. Now, with great pleasure, let me invite our valued partner, Mr. Larry Fink, Chairman and CEO of BlackRock, to share his vision for our partnership. Thank you, Mukesh. It is an honor to have the opportunity to address the Reliance Industries annual general meeting, and I couldn't be more excited about our new partnership. For 35 years, BlackRock's mission has been to make investing easier and more affordable for millions of investors around the world. That's why I'm so proud of our forthcoming joint venture in India with Jio Financial Services, a company built by Reliance Industries. Our companies have a shared vision to create better financial futures, and Jio BlackRock will deliver our combined expertise and scale to unlock the power of investing for millions of people throughout India. BlackRock is already one of the largest non-Indian investors in India today, and India lies at the heart of our global platform. Over the past 15 years, BlackRock's presence in India has grown to thousands of employees across offices in Mumbai, Gurgaon, and Bangalore,
whose skills span investments and operations and analytics and modeling, digital marketing, and human resources. Global investors recognize that India is at the cutting edge of digital transformation, in large part because of Reliance and Jio have built a digital and consumer ecosystem unparalleled anywhere else in the world. We've seen the speed of change and the unique combination of talent, of innovation, and digital infrastructure transformed entire industries in India. And we see enormous potential for growth in the country's asset management industry. The convergence of rising affluence, favorable demographics, and digital transformation across industries is reshaping the market in incredible ways. We see growing financialization and a shift from unmanaged and physical assets to savings and investments. And we expect this to increase as per capita GDP continues to rise and technology advances digital inclusion. There is an unprecedented opportunity to transform the asset management industry by introducing a full-service tech-enabled asset manager with affordable and transparent investment products to meet the needs of every segment of society. Jio Financial Services bring digital infrastructure and capabilities and local market knowledge, and BlackRock brings global investment and risk management expertise. Together, we will aim to transform the asset management industry through a digital-first offering and democratization of access to affordable, innovative investment solutions for millions of investors throughout India. India represents a tremendous opportunity, and Jio BlackRock demonstrates our commitment to India's continued growth and promise. Thank you, Mukesh, for the opportunity to speak today. I am incredibly excited about our new partnership and wish all the best to the entire Reliance industry team for another great year ahead. Thank you, Larry, for sharing your vision. We look forward to working together to make this vision a reality. Dear shareholders, in payments, JFS will consolidate its payment infrastructure with a ubiquitous offering for both consumers and merchants, further driving digital adoption for India. JFS products will not just compete with current industry benchmarks, but also explore path-breaking features such as blockchain-based platforms and CBDC. They will adhere to the highest standards of security, regulatory norms, and ensure protection of customer transaction data at all times. JFS will enter the insurance segment to offer simple yet smart life, general, and health insurance products through a seamless digital interface, potentially partnering with global players. It will use predictive data analytics to co-create contextual products with partners and cater to customer requirements in a truly unique way. Dear shareholders, just like Jio and retail, JFS too will prove to be an invaluable addition to the Reliance ecosystem of customer-facing businesses. I have 3 reasons to be absolutely confident about JFS achieving tremendous success over the next few years. First, the digital-first architecture of JFS will give it an unmatched head start to reach millions of Indians. Second, this is a highly capital-intensive business. Your company has provided JFS with a strong capital foundation to build a best-in-class, trusted financial services enterprise and achieve rapid growth. Reliance has capitalized JFS with a net worth of rupees 1,20,000 crores to create one of the world's highest capitalized financial services platforms at inception. Third, JFS is blessed with a very strong board led by Shri K.V. Kamath, a veteran and most respected banker. A highly motivated leadership team is being built with a combination of financial industry experts and young leaders who are eager to take on big challenges. I call upon all of you to join me in wishing the JFS team the very best in their ambitious endeavors. Dear shareholders, I now come to our oil and gas business.
gas is a key transition fuel in our nation's quest for clean and sustainable energy. With our valued partner BP, we have revived gas production from the KGD6 block from near zero a few years back to about 20 million cubic meters per day in the financial year 23. This is led by successful commissioning and safe delivery of gas from the R cluster and the satellite cluster projects in the financial year 21 and 22 respectively. Continuing with our effort, this year we commissioned one of the most complex and most efficient deep water projects of this scale, the MJ field in KGD6 block. This includes a state-of-the-art FPSO, which is among the largest and the most complex in the world, with a gas production capacity of 14 million cubic meters per day. My congratulations to the entire oil and gas team for successfully commissioning the MJ field in less than 3 years, amongst the fastest in the industry. We are well on our way to enhance production to 30 million standard cubic meters per day, which will be 30% of India's gas production and 15% of its current gas demand. At a time when global energy supplies and prices are witnessing unprecedented volatility and uncertainty, this gas is a major source of clean energy saving, up to $7 billion per annum in imports for our country. We are pursuing further enhancement with our exploration efforts in KGUDW1 and KGUDW2 blocks in the Krishna Godavari basin, with an aim to sustain our gas production over the next 15 to 20 years. Reliance is today India's only company with proven capabilities in exploring and producing oil and gas from deep and ultra-deep water blocks. We will leverage these capabilities in related renewable energy areas like offshore wind and geothermal. Dear shareholders, in the year gone by, our oil to chemicals business operated in a highly volatile global scenario. Despite all the challenges and a new one-time tax in the form of special additional excise duty, our O2C EBITDA for the financial year 23 improved by 17.7% to a record high of 62,075 crores. Our talented teams ensured that our asset utilization remained higher than the industry average through robust planning and exceptional teamwork. We operated with the lowest level of feedstock inventory in our history to benefit from opportunities in a turbulent global oil market. Fully utilizing the flexibility and integration of our assets, we added 13 new grades of crude oil and feedstocks. We ensured high availability of the gasification unit to minimize the purchase of high-cost LNG to lower our energy costs. Our partnership with BP in fuel retailing and mobility solutions continued to make steady progress. Friends, we have embarked on our journey to transition our O2C business into a sustainable, green, circular, and consumer-integrated chemicals and materials business. The key pillars of this transition are: first, we are accelerating our journey to achieve net zero by 2035 through use of renewables and bioenergy for a sustainable and green business. We are well on our way to build the new energy ecosystem of manufacturing solar, wind, batteries, hydrogen, and bioenergy platforms. This will enable us to speed up the development of our renewable generation assets to deliver round-the-clock electricity for our captive requirements, as well as to meet the growing needs of Indian consumers. As the cost of renewables will be significantly lower compared to fossil fuel-based energy, this will result in reduced energy cost and improved profitability for our O2C businesses. Second, we are accelerating circularity and consumer integration. We have also been working on scaling up
our chemical recycling technology to deliver application-specific green products. This is helping us access high-value, high-potential customers in new value chains. Third, with technology and innovation, our refinery at Jamnagar will be progressively operated as a chemicals and material feedstock production engine. We started this by converting some low-value refinery streams to recently launched, highly specialized halobutyl rubber grades and a new purified isophthalic acid plant, which is under commissioning. As announced last year, we are executing India's first and world-class carbon fiber facility in Hazira, Gujarat. Our carbon fiber platform will include carbon fiber and carbon fiber reinforced plastics. Our target is to be among the top 3 players globally in the carbon fiber and the carbon fiber reinforced plastic composites. Dear shareholders, with climate crisis looming large, the world is going through a multi-decade era of transformation from fossil fuels to green energy. This transformation requires significant investments in skills and capabilities, technology and innovation, as well as in building large-scale manufacturing ecosystems. All this provides strong tailwinds to our new materials and new energy businesses. The next few years is going to be transformational for your company as leading from the front. It positions India to be a world leader and trendsetter in energy transition. My dear shareholders, we remain focused on fast-track execution of our Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Manufacturing Complex at Jamnagar. Our first priority is to deliver a fully integrated end-to-end solar PV manufacturing ecosystem. This will be one of the largest, most technologically advanced, flexible, and cost-competitive solar gigafactory globally, and will be converting sand into solar PV modules. Our solar gigafactory will include manufacturing of PV modules, cells, wafers, and ingots, polysilicon, and glass at a single location in Jamnagar. We will target to bring the factory on stream in a phased manner by the end of 2025. We will be deploying leading-edge heterojunction technology for manufacturing one of the highest efficiency solar PV cells and modules globally for utility scale and rooftop power generation. We will further continue to innovate and maintain global leadership. Friends, we will also pursue wind power generation. Towards this, we have made significant progress in developing a manufacturing ecosystem critical to achieving cost-efficient wind generation at giga scale. One of the significant cost drivers in manufacturing of wind blades is carbon fiber. Our foray into manufacturing carbon fiber at large scale provides us with a unique advantage to further integrate and reduce cost of wind turbines. In addition, we will be partnering with the world's leading technology players in wind equipment manufacturing to deliver most cost-efficient solutions. We will further leverage our engineering and construction capabilities along with our giga-scale manufacturing ecosystem to accelerate and enable installation of at least 100 gigawatt of renewable energy generation by 2030. Friends, our concurrent priority is to set up a battery gigafactory by 2026. It will manufacture battery chemicals, cells, and packs, leading all the way up to containerized energy storage solutions, and will include a battery recycling facility to deliver a truly integrated ecosystem. We will start with the LFP chemistry, which has been proven at scale for its safety, stability, and life
targeting to produce LFP-based solutions at world-beating life cycle costs. Simultaneously, we are focused on fast-track commercialization of our sodium-ion battery technology. We will build on our technology leadership position by industrializing sodium-ion cell production at megawatt level by 2025 and rapidly scale up to gigawatt scale thereafter. My dear shareholders, integration of energy storage with wind and solar power generation is critical to provide grid-connected, round-the-clock electricity. We are well on our way to prove this integration at megawatt scale in the next few quarters at Jamnagar. This will be followed by grid-scale deployment of batteries to convert intermittently captured photons into electrons and make them available round the clock for our captive requirements as well as for India's growing energy needs. My dear shareholders, let me now share with you our progress on green hydrogen. When I spoke with you last year, we were still working on two critical components for delivering most competitive green hydrogen and its derivatives, cost of renewable power generation and installed cost of electrolyzer for giga-scale deployment. Our solar and wind energy integrated manufacturing ecosystem will deliver the most cost-efficient renewable power. I can also confidently now say that we have a roadmap towards achieving our targeted cost of electrolyzers and in turn green hydrogen. In collaboration with our technology partners, we are firmly on our way to successfully demonstrate this first at megawatt scale. We will leverage our engineering capabilities, large-scale manufacturing, and localization to optimize this at gigawatt scale. In parallel, we will set up a fully integrated, automated, gigawatt-scale electrolyzer manufacturing facility. This will enable us to establish large-scale green hydrogen production at Jamnagar, gradually transition our captive requirements, and simultaneously integrate with green ammonia and green methanol production for domestic and international markets. Your company is uniquely positioned to be a global leader in green chemicals, manufacturing by leveraging its O2C infrastructure, talent, and execution capabilities. Friends, I am happy to present an early success story. Your company prides itself in embracing societal challenges and delivering world-class solutions suited for India. In the same spirit, we took to solving the problem of severe pollution faced by many of our Indian cities during winters caused by stubble burning and accelerated our plans to deploy bioenergy projects. India produces nearly 230 million tons of non-cattle feed biomass, most of it contributing to air pollution. Within a short span of 1 year, we have become India's largest bioenergy producer based on our indigenously developed technology. After setting up 2 demo plants for compressed biogas at Jamnagar, we have commissioned the first commercial-scale compressed biogas plant at Barabanki in UP in a record time of just 10 months. We will rapidly scale this up to 25 CBG plants across India. Our target is to establish 100 such CBG plants in the next 5 years, consuming 5.5 million tons of agro residue and organic waste, thereby mitigating nearly 2 million tons of carbon emissions and producing 2.5 million tons of organic manure annually. This will result in a reduction of about 0.7 million tons of imported LNG. My dear shareholders, we are progressing well to deploy our committed capital of 75,000 crores to build our new energy manufacturing system. This will enable us to accelerate gigawatt scale production for round-the-clock power
and for large-scale green hydrogen production, for green chemicals manufacturing, as well as green mobility. We will continue to invest in technology and talent. We will collaborate with global technology and product companies, including startups, focused on commercializing emerging and disruptive technologies. We are rapidly adding to our rich talent pool of several thousand scientists, engineers, and innovators drawn from countries around the world. Our transition to net zero and building a sustainable chemicals business will result in increased revenue, reduced energy cost, improved profitability, and providing a near perennial growth platform in India and overseas for our materials and energy businesses. Esteemed shareholders and other stakeholders, Reliance is uniquely positioned to offer a practical solution to the energy trilemma India has been facing. Let me explain. The energy trilemma demands action to overcome three challenges. One, affordability of energy. How to ensure that every citizen and every economic activity in India has access to adequate and most affordable energy. Two, sustainability of energy. How India can rapidly transition from fossil fuel-based energy to clean and green energy. Three, security of energy. How the expanding needs of a fast-growing Indian economy can be de-risked from geopolitical rivalries, conflicts, and potential supply disruptions. Reliance's new energy and new materials businesses squarely address this trilemma. Green energy is becoming affordable because its costs are already much less than those of non-renewables, and they will come down further. Green energy is sustainable because the sun and the wind are never going to disappear. Green energy is secure because India will no longer be dependent on large-scale imports for its energy needs. Furthermore, Reliance will have indigenous technology ownership and manufacturing capabilities. In fact, Reliance has a golden chance to enable India to transform itself from a net energy importer to a net energy exporter. Therefore, as I look to the future, I can clearly see Reliance creating substantial wealth for India and for all our shareholders in perpetuity. Dear friends, I am very proud of the work Reliance Foundation has been doing under the leadership of Srimati Nita Ambani, be it in the use of technology or being amongst the first to provide relief to those affected by disasters or working with partners. Our Reliance Foundation teams are working tirelessly to make lives better for millions of Indians. I would now like to invite Nita to talk about Reliance Foundation and its work. Thank you, Mukesh. Dear members of Reliance family, our esteemed shareholders, Namaskar. I hope each one of you and your families are doing well. I always look forward to this opportunity to connect with all of you. So it's with great pride and a sense of profound purpose that I share my thoughts with you today. I represent the beating heart of Reliance, our beacon of empowerment and transformation, the Reliance Foundation. For us, business and philanthropy complement and reinforce each other because both are guided by the same spirit of we care. Together, they multiply the impact of everything we do in terms of improving lives of millions of Indians, especially those belonging to underprivileged and marginalized sections of our society. I'm happy to share that through the multifarious activities of Reliance Foundation, we have so far touched the lives of nearly 70 million Indians across the smallest towns
and remotest villages of our country. From culture to climate, from education and sports to women's empowerment, from healthcare to livelihoods, and from rural transformation to disaster management. We work in all states and over 54,000 villages across India. I would now like to share with you a glimpse of our journey, the milestones we achieved this year, and the path ahead. Dear friends, with immense pride and excitement, I will start with a project that's very close to my heart. In April this year, we opened doors to the Nita Mukesh Ambani Cultural Center in Mumbai. Art and culture bind communities and countries together and bring hope and happiness to humanity. For a long time, Mukesh and I had nurtured a dream that India should have a world-class cultural center. NMACC is a realization of that dream. It's an ode to our great nation, a tribute to our artistic heritage, and a dedication to all young Indians. Our vision is to showcase the best of India to the world and bring the best of the world to India. Over the last 5 months, we have worked hard to live up to that vision. We started with our very own production, the great Indian musical, Civilization to Nation, and followed it up with the iconic Broadway musical, The Sound of Music. We hosted maestros of Indian arts like Ustad Amjad Ali Khan, Pandit Hari Prasad Chaurasya, and Pandit Kartik Kumar. Our smaller theatres are designed to be incubators of talent. They are the soul of NMACC, encouraging and empowering budding young artists with opportunities. From international art exhibitions to Parampara and Bachpan, we have and will continue to curate cultural experiences for the people of Mumbai and all over India. I'm pleased to share with you that since the opening of NMACC, we have welcomed over 20 lakh visitors at the centre. For me, the most heartwarming experience at NMACC has been Swadesh. Swadesh is our humble initiative to preserve and promote India's age-old arts and crafts. At Swadesh, we give a global platform to India's traditional artisans whom the Reliance Foundation has been honoured to support for over a decade. Featuring arts like Pichwai and Pattachitra, weaves like Banarasi, Paithani, Patola, crafts like Kashmiri carpets and shawls, and blue pottery. Swadesh spotlights the spirit of Make in India and offers respect and sustenance to our skilled craftsmen and women. These artisans truly are the pride of our country. We have therefore drawn up exciting plans to grow the Swadesh brand globally. This will be supported by a new initiative, the Reliance Foundation Skilling Center for Artisans. This digitally enabled capacity building program will transform the craft sector by creating attractive livelihoods and raising the social prestige of Indian artisans across the country. It has been an honor for us to support them and their artistic legacy that has been passed down over generations. I welcome all of you to come visit Swadesh at NMACC and support our artisans. Friends, I would now like to talk about our work with the future of India, our children. There are over 250 million children in India's schooling system. They are the ones who will create a new India. Through the power of 5G, our vision is to connect these 250 million children to quality education and employment opportunities. I am pleased to share that our flagship Dhirubhai Ambani International School continues to be amongst the top IB schools globally and the #1 international school in India for 10 consecutive years. It's a happy school where teaching is a pleasure and learning a joy. We are now eagerly looking forward to opening our new school, the Nita Mukesh Ambani Junior School. Led by my daughter Isha, this new school
is envisioned as a model school of the future with an Indian soul. As a teacher myself, I know that teachers are the heart of driving education. We are committed to scaling up our efforts to build teachers' capacity for delivering 21st century learning to our children. Therefore, I'm happy to share that we are establishing a world-class Teacher Leadership Institute and awards to foster teacher innovation. Dear shareholders, last year we celebrated the 90th birth anniversary of our founder chairman and my father-in-law, Shri Dhirubhai Ambani. As a tribute to Papa, we have made a commitment to support 50,000 students through Reliance Foundation undergraduate and postgraduate scholarships over the next 10 years. We are pleased to have awarded 5,100 scholarships this year. Papa was a big believer in the power of youth. We hope these scholarships empower young minds to become the torchbearers of innovation, progress, and transformation. Friends, women and children have always been at the heart of all the work we do. In about a decade, India will have the largest number of women in the world. Empowering them is no longer just a responsibility. It is a necessity for our country to reach the heights that we aspire and deserve to. At Reliance Foundation, we are committed to encouraging, enabling, and empowering women in every corner of our country. Because I firmly believe that what women cannot do cannot be done. Through our Women Lead India Fellowship with Vital Voices, we aim to support women social sector leaders all over India. Our digital platform, Her Circle, is now India's largest content and networking website and app for तो आप ये women देख रहे थे रिलायंस की with a reach of 46वीं एजीएम में मुकेश अंबानी ने बड़ी घोषणाएं की। उसका इम्पैक्ट ये है कि स्टॉक मार्केट पे तो कुछ ज़्यादा हलचल नहीं देखने को मिली रिलायंस के शेयर में, लेकिन अब इसको डिकोड करेंगे कि इस एजीएम में क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया। मेरे साथ आलोक जोशी जी जुड़े हैं। आप इनको BIZ में देखते हैं रोज, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका BIZ तक। सर, ये एजीएम एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी है देश में मार्केट कैप के लिहाज से, उसकी जब एनुअल जनरल मीटिंग हो तो वो इम्पैक्ट तो डालेगी स्टॉक मार्केट पे। आज स्टॉक मार्केट तो स्टेबल हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 9 हफ्ते के निचले स्तर पे पहुंच गया। एक तो जब ये एजीएम शुरुआत हुई थी, ये डिजिटल कारोबार पे फोकस बहुत ज़्यादा था। आप कैसे देखते हैं इस एजीएम में क्या कुछ जो घोषणाएं हुई हैं वो बाजार को पसंद आएंगी? सॉरी, देखिए रजत, मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जिस कारोबार में है, जो उसका कोर कारोबार रहा है ऑयल एंड गैस, वो फॉसिल फ्यूल बिजनेस है और उनको ये आशंका लगातार सताती है और उसके शेयर होल्डर्स को भी सताती है कि कल को फॉसिल फ्यूल कारोबार ख़त्म हो जाएगा तो इस कंपनी का क्या भविष्य होगा। और इससे देखने वाले या छोटे शेयर होल्डर जितना जूझते हैं उससे ज़्यादा मुझे लगता है मैनेजमेंट जूझ रहा है और इसीलिए वो ये दिखाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं कि हमारे पास और बहुत कुछ है, हम नए एरियाज़ में जा रहे हैं, हम नई टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, नए कारोबार कर रहे हैं, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से हम देखते हैं कि एजीएम के भाषण की शुरुआत में पहले न्यू एज बिजनेसेस की चर्चा होती है, डिजिटल की बात होती है, रिटेल की बात होती है, ऑल्टरनेटिव एनर्जी की बात होती है, तब ये आते हैं अपने कारोबार पे O2C, जिसको आप ऑयल टू केमिकल बिजनेस कहते हैं, उस पर आते हैं। तो इसलिए मुझे ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं लगी कि वो शुरू में उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया, वो पहले जो। और इस वक्त अगर आप बाज़ार में लोगों से आज सुबह पूछते कि आप क्या देखना सुनना चाहते हैं, तो सबकी नज़र इस बात पे थी कि मुकेश भाई शायद आज ऐलान कर दें कि अब रिलायंस रिटेल का IPO कब आएगा या उसकी लिस्टिंग का ऐलान कब होगा। क्योंकि IPO तो मुझे नहीं लगता है कि आएगा फ़िलहाल, लेकिन जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग हुई उसको डीमर्ज करके, वैसे ही ये जियो का और रिटेल का डीमर्जर और उसकी लिस्टिंग बाज़ार इसका इंतज़ार कर रहा है। बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि अब शायद आज एजीएम के दिन ये ऐलान आ जाए, अभी तक तो ये ऐलान सामने आया नहीं है। इस वजह से भी थोड़ी निराशा दिख रही है और शायद जो कहते हैं बाज़ार में कि मार्केट को पहले खबर लग जाती है कि आज ये ऐलान नहीं होने वाला है, इसलिए आपको सुबह से ही ठंडा दिख रहा है बाज़ार। जब से रिलायंस का शेयर 1% के आसपास नीचे, 9 वीक लो जैसे आपने अभी बताया, तो ये
कोई परेशानी, कोई तकलीफ का इंडिकेटर नहीं है। ये इस बात का इंडिकेटर है कि हम आपसे कोई बड़ी चीज़ की उम्मीद कर रहे थे और वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है। अच्छा, लेकिन सर ये सबसे जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े ना उनसे मैंने पूछा ये वाली एजीएम अच्छी लगती है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब वाली एजीएम, या फिर वो जो एजीएम हुआ करती थी जो फुटबॉल ग्राउंड में हुआ करती थी? आपने तो वो दौर भी देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज का। देखिए, रिलायंस के शुरुआती दौर में और ख़ास तौर पे जो इस समय कहते हैं 46th एजीएम आफ्टर लिस्टिंग, आफ्टर आईपीओ। हाँ, तो जब ये आईपीओ लाए थे शायद 77 में, 77, यस हाँ, सन 77 में आईपीओ आया था। उस वक्त शेयर बाज़ार से बहुत कम लोग जुड़े होते थे। धीरू भाई अंबानी को जिस चीज़ का श्रेय दिया जाता वो ये है कि आम आदमी को बाज़ार की तरफ खींच के लाए वो। यस। और इसके लिए उन्होंने जो नुस्खे आजमाए वो ये थे कि उन्होंने फुटबॉल स्टेडियम किराए पर लिया एजीएम करने के लिए। जिस वक्त लोग कोई होटल के कमरे में कर लेते थे, कभी कोई एक ऑडिटोरियम ले लेते थे, रिलायंस भी काफ़ी समय तक अपनी ये एजीएम बड़े हॉल्स में करता रहा है। तो वो फुटबॉल स्टेडियम को जब उन्होंने लिया किराए पे और उसको भर के दिखाया तो ये एक तरह का पूरे देश में मैसेज गया कि इतने शेयर होल्डर कोलाबा में। हाँ, और एक समय इस कंपनी के पास 32-35 लाख शेयर होल्डर्स की फैमिली थी, तो वो इस बात को बोस्ट करते थे। लेकिन आज क्या बोस्ट करने की ज़रूरत है? अगर आप रिलायंस के मैनेजमेंट की नज़र से देखें कि हम बिना कोई कमरा लिए, बिना कोई हॉल लिए, बिना कोई मैदान लिए अपनी पूरी एजीएम कर सकते हैं, और ये हम अपनी टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे हम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, वो मसल फ्लेक्सिंग है, ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास कितना दम है। और हम इस कारोबार में भी, जो टेलीकॉम का कारोबार पहले लगता था कि इनके ऑयल एंड गैस बिजनेस के मुकाबले एक छोटा बिजनेस होगा, ये वैसा छोटा बिजनेस नहीं है। और ये बात मुकेश अंबानी को कहे हुए अब लगभग 8 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो वो डेटा को उस तरह देख रहे हैं जिस तरह पुरानी दुनिया में ऑयल को देखा जाता था। और मुझे लगता है कि ये वर्चुअल एजीएम करने का, इस साल भी करने का जो फैसला है वो इसी वजह से है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि दुनिया आगे बढ़ गई है, अब हमें पीछे की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वो जो आप डिजिटल सर्विसेज बिजनेस के बारे में बात करें ना, एजीएम शुरू ही उससे हुई थी और मुकेश अंबानी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। एक तो उन्होंने ये बोला कि 45 करोड़ ग्राहक हो चुके हैं जियो के और ये बहुत ही स्पीड से ग्रो करके गया। वो ये कह रहे हैं कि ये इतनी स्पीड से ग्रो करके गई है रिलायंस जियो 5G रोल आउट कि आज तक इतिहास में कभी किसी देश में किसी भी टेलीकॉम प्रोवाइडर ने इतनी तेज़ ग्रोथ नहीं दिखाई 5G की जिस तरीके से रिलायंस ने दिखाई है। ऊपर से कह रहे हैं कि कंजम्पशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, 96% सेंसस शहरों में तो रिलायंस जियो पहुंच चुका है और अभी आने वाले समय के लिए एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े हैं। इकोसिस्टम ऐसा बनाया है रिलायंस जियो ने कि जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं, एक तो जो बनते हैं प्रोडक्ट्स 5G के, वो भी आत्मनिर्भर भारत के तहत बन रहे हैं डोमेस्टिकली, और उसके बाद जो बेचते हैं तो रिलायंस रिटेल में क्रॉस सेलिंग करते हैं। तो इस तरीके का इकोसिस्टम है कि पूरे ग्रुप को फ़ायदा हो। ये सर स्कूल्स, फैक्ट्रीज, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे आ जाएगा और वे बोल रहे हैं कि हर नागरिक तक पहुंचाएंगे ये जो जियो की सर्विसेज है रिलायंस जियो की। तो इसको कैसे देखते हैं सर? ये तो बिल्कुल एक गेम चेंजर होगा टेलीकॉम इंडस्ट्री में। वो देखिए, वो है, इसमें कोई शक नहीं है जैसे आप बता रहे हैं। और फिर आप इसको अगर आप रिलायंस के मॉडल के साथ जोड़ कर, ये वो भी कह रहे हैं कि दिस विल बी अ टेक कंपनी। वो है ही। आप ये कंपनी अब टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ या फाइनेंशियल सर्विसेज पावर हाउस बनने की तरफ या एक बड़ी रिटेल कंपनी बनने की तरफ बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। रिलायंस देश का सबसे बड़ा रिटेलर बन चुका है, टेलीकॉम में वो सबसे बड़ी कंपनी बन रहे हैं। इसके साथ जो नई चीज़ें वो जोड़ रहे हैं, इसको अगर आप देखेंगे तो ये वापस फिर आपको जाना पड़ेगा धीरू भाई अंबानी के ज़माने में, कि जिन्होंने पॉलिएस्टर के कारोबार से अपना काम शुरू किया। वो कपड़ा लेके बेचने का काम करते थे, वहाँ से उन्होंने कपड़ा बनाने का, फिर धागा बनाने का, फिर धागे का केमिकल बनाने का, फिर पेट्रोकेमिकल बनाने का, फिर पेट्रोलियम रिफाइनरी तक वो पीछे की तरफ बढ़ते चले गए। आज आप देखें तो ये जिस काम में आए हैं अब इसमें ये आगे पीछे दोनों तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं कि हम एक कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और हम ऐसी कंपनी बनाएंगे जो यहाँ से वहाँ तक सब कुछ करती होगी। इसीलिए वो जब जियो लॉन्च किया था पहली बार भी, आप याद करिए, उनका जो फ़ोन आया था, जो जिसको धीरू भाई प्लान कहते हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन का, वो रिलायंस कम्युनिकेशन का आया था अनिल अंबानी के टाइम। तब अनिल अंबानी नहीं थे। अच्छा। तब मुकेश अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन को चलाया करते थे। ओके। बंटवारे के पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। वो मुकेश अंबानी का ब्रेन चाइल्ड था। बंटवारे में वो कंपनी अनिल अंबानी को चली गई थी।
क्योंकि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज में उनको कोई हिस्सेदारी नहीं देना चाहते थे, इसलिए बाकी सारे बिजनेसेस अनिल अंबानी को चले गए, लेकिन वो बिजनेसेस भी मुकेश अंबानी के खड़े किए हुए बिजनेस थे। तो वहाँ भी उन्होंने एक हैंडसेट का ऑफर दिया था, उस समय भी एक सस्ता हैंडसेट उन्होंने दिया था, लाइफ टाइम फ्री। इसी तरह अब जब वो 3G 4G 5G में जा रहे हैं तो हर बार वो अपना एक हैंडसेट साथ में क्लब कर रहे हैं कि हम आपको एक ऐसी चीज़ देंगे जिसमें सारा सोल्यूशन मिल रहा है। या घर पे आपके जो फाइबर कनेक्शन लग रहे हैं उसमें उसके साथ OTT प्लेटफॉर्म भी चलेगा। अब वो जियो सिनेमा, जियो टीवी, तमाम तरह के प्लेटफॉर्म उसमें अवेलेबल हैं, अपना टेलीविज़न चैनल भी ले लिया उन्होंने। तो ये आप कह सकते हैं कि हम जो करेंगे पूरा करेंगे, जिस सिर से पैर तक सब काम हम करेंगे, और आप बस हमारा एक कनेक्शन ले लो, बाकी आपको कोई सिरदर्द पाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जियो सिनेमा भी फिर एक, ये भी तो एक ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गई। अच्छा, आपने तो एक लीडिंग बिजनेस चैनल को हेड भी किया है सर, वो जिस तरीके से अभी रिलायंस बढ़ रही है और जो पहले रिलायंस फोकस कर रही थी ऑन सैटेलाइट टेलीविजन एंड ऑल, ये OTT प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आने वाले समय के लिए ग्रोथ होगी क्या मीडिया की? आज की तारीख में अगर आप देखें तो ज़्यादातर लोग, आप देखिए, वो घर पे बड़े टीवी हैं तो उनमें OTT की सीरीज़ देख रहे होते हैं, कभी कभी मैच आता है वो देखते हैं, वरना ज़्यादातर कंजम्पशन आपके हाथ में मोबाइल पे हो रहा है। एक घर में एक कमरे में बैठे 3 लोग अलग अलग हैंडसेट्स पे अलग अलग प्रोग्राम देख रहे होते हैं। टीवी देखने वाले भी अब ज़्यादातर समय अपना उस पर देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, घर में बड़ा टीवी बुज़ुर्गों के कमरे में या उस जगह लगाए जहाँ वो बैठे रहते हैं, क्योंकि उनकी वो पुरानी आदत है। और ये वजह है कि अब ऐसा लगता है यहाँ से आने वाले समय में, अगले 2-4-5 साल में ही आपको वो जो ट्रेडिशनल मीडिया जिसको कहा जाता था, वो ट्रेडिशनल मीडिया वो उस रूप में नहीं दिख पाएगा। ये नई तस्वीर ही देखने को मिलेगी। चलिए, आपके पास अभी आता हूँ। मेरे साथ एक और खास मेहमान इसमें जुड़े हैं, अमित कुमार गुप्ता जी जुड़े हैं फिनट्रेक कैपिटल से। अमित जी नमस्कार, स्वागत है सर BIZ TAK पे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्कार अजय जी नमस्कार। आलोक जोशी जी मेरे साथ इसमें मौजूद हैं। सर, एक तो ये बताएं, जो AGM हुई है रिलायंस में, इसमें आपने की पॉइंट्स बताइए जिसको देखकर आपको लगता है कि शेयर होल्डर्स की कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात उन्होंने की है। आई थिंक कोई बड़ी अनाउंसमेंट तो नहीं थी AGM में। यूजुअली जो अनाउंसमेंट्स थी वो एक्सपेक्टेड ही थी। 2-3 की जो पॉइंट्स निकल के आए हैं वो ये कि एक तो जियो एयर फाइबर जो है वो 19 सितंबर को लॉन्च होगा, गणेश चतुर्थी के दिन। सो उसमें अभी इनको इशू जो आ रहा था वो ये कि जो 5G प्रोवाइड करना था इनको ब्रॉडबैंड पे, वो नहीं हो पा रहा था। तो अब ये एयर फाइबर के थ्रू और एक सिम और लगेगा, और जो कि सिग्नल्स इजीली कैच करके आपके घर तक पहुंचा सकेगा। तो आई थिंक वो ये जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज थी वो ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी एयर फाइबर से। सेकेंडली आई थिंक जो इन्होंने नया अभी कंपनी डीमर्ज किया है फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें दे हैव क्लैरिफाइड दैट दे वांट टू गेट इनटू ऑल काइंड ऑफ इंश्योरेंसेस, लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस। AMC में तो ऑलरेडी उन्होंने टाई अप कर ही लिया है विद BlackRock। बट आई थिंक करीब 1.5 से 2 साल लगेंगे इनको ऑपरेशनली पूरा एक्टिव होने में, क्योंकि अभी काफी जगहों पे इन पे लाइसेंसेस भी नहीं है। तो वो लाइसेंस आएंगे, उसके बाद ऑपरेशन सेटअप होंगे। तो आई थिंक एटलीस्ट 1 साल तो लगेगा, ज्यादा भी लग सकता है, बट 1 साल तो मिनिमम लगेगा। नहीं, पर अमित जी 45 करोड़ ग्राहक हो गए जियो। इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री, स्पेशली ये जो मोबाइल नेटवर्क है, 5G रोल आउट बोल रहे हैं 9 महीने में 96% शहरों तक पहुंच गए हैं, और ग्रोथ तो यहाँ से और वो समझ रहे हैं कि होती हुई नजर आएगी। टेलीकॉम इंडस्ट्री का भविष्य कैसा होगा, और उसमें रिलायंस जियो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा? ड्यूपोली हो चुकी है। आई थिंक वोडाफोन का रिवाइवल होना बहुत मुश्किल है। तो MTNL BSNL का जो इवेंचुअली आज की डेट में कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन, वैसे ही वोडाफोन भी मुझे लगता है हो जाएगा। बिकॉज अगेन वो उसका इशू वोडाफोन का यही है कि सब्सक्राइबर्स कम होते जा रहे हैं, तो रेवेन्यू भी कम होता जा रहा है, और डेट जो है वो खड़ा हुआ है उतना ही। तो आई थिंक ये ड्यूपोली हो जाएगा। उसमें मे बी
likely that Jio will be number 1 and Airtel will be number 2. But I think फोन से ज्यादा वो अब ब्रॉडबैंड पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक उसमें एक लिमिट आ गई है. ऑब्वियसली वो जो एक शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम वोडाफोन टू एयरटेल एंड जियो, दैट विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स ऑल्सो. बट इनका ज्यादा फोकस अब 5G पे और ब्रॉडबैंड पे आ गया है, क्योंकि बड़ा पैसा अब उसी से बनेगा. स्पेशली मैंने अभी सुना आप बात कर रहे थे रिगार्डिंग OTT प्लेटफॉर्म्स. सो वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट आता है वो ब्रॉडबैंड से ज्यादा बेटर चलता है. लेकिन आलोक जी, ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को रिलायंस के बोर्ड में शामिल कर लिया है. नीता अंबानी ने छोड़ा है बोर्ड में, तो इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, देखिए वो ट्रांसफॉर्मेशन तो वहाँ होना है. और पिछली AGM में आप याद करें तो मुकेश भाई ने कहा था कि हम अब नई पीढ़ी को कमान सौंपने जा रहे हैं. और उसमें तो कुछ इस तरह के संदेश भी पढ़े गए थे कि अब शायद वो अपने सीनियर मैनेजमेंट को मैसेज दे रहे हैं कि या तो आप इन बच्चों के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाइए, और वरना आपको शायद बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है. और तीनों बच्चों को बोर्ड में जगह मिलने का एक संदेश ये है कि मुकेश अंबानी शायद अपने परिवार का जो बंटवारा या संपत्ति का बंटवारा करेंगे, जो सक्सेशन प्लान है उसमें बेटी को भी वो भूमिका दे रहे हैं जो अपने बेटों को दे रहे हैं. तो यहाँ बेटे बेटी के बीच में फ़र्क होने वाली जो आशंका थी वो नहीं दिखाई पड़ रही है. नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बोर्ड से हट गई हैं. उन्होंने बोर्ड मीटिंग में आज रिजोल्यूशन पास हुआ. उसको बहुत ज़्यादा उसमें कुछ बहुत पढ़ने को नहीं है, क्योंकि वो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी रहेंगी और उस हैसियत से वो बोर्ड में आके बैठेंगी. वो परमानेंट इन्वाइटी होंगी. तो ये मुझे लगता है इसमें मुकेश अंबानी या नीता अंबानी के होने न होने से ज़्यादा पढ़ने की बात ये होगी, अब आगे आते हुए दिखेगा कि और कौन लोग बोर्ड में आते हैं और कौन लोग बोर्ड से हटते हैं. नई पीढ़ी किस तरह से पैन आउट कर रही है. अब आकाश, ईशा और अनंत के साथ ही कौन लोग बोर्ड में नई जगह पाते हैं. ये आज की तारीख में नहीं दिखेगा, इतनी जल्दी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बोर्ड चेंज नहीं होगा. लेकिन नज़र अब वहाँ होनी चाहिए कि गार्ड्स कैसे चेंज होते हैं. क्योंकि माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए जगह छोड़ देते हैं, और वो बोर्ड में बैठें ना बैठें, कुर्सी पर रहें ना रहें, जब तक वो चाहेंगे कंपनी में उनका कंट्रोल उस तरह बना रहेगा जिस तरह वो रखना चाहते हैं. लेकिन इसके साथ वो अब अपनी पूरी टॉप टीम को कैसे तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए, उसको लोग ज़्यादा बारीकी से देखना चाहिए. पर आलोक जी, ना सबके मन में यही सवाल है, हर रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होल्डर के मन में, कि दिस इज़ अ ट्रांजिशन फेज जिसमें आप न्यू जनरेशन को अपने बिजनेसेस को सौंप रहे हो. उसमें टाइम तो लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर है. शेयर होल्डर्स को कुछ इससे घबराना चाहिए या फिर इट्स अ वैल्यू क्रिएटर, और ये आने वाले समय के लिए रिटेल की लिस्टिंग होगी, जियो की लिस्टिंग होगी, जियो फाइनेंशियल की ऑलरेडी हो चुकी है, तो कुछ डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है. देखिए, जो हमने दौर देख लिया मुकेश अंबानी का, हमको पता है कि कितनी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है. धीरूभाई अंबानी ने तो कमाल ही कर दिया था. लेकिन अब ये न्यू जनरेशन के हाथ में जो जा रही है कमान, तो इसमें क्या निवेशकों को कुछ कॉशियस रहना चाहिए या फिर ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त? देखिए, इसमें जो दो वर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, जियो और रिटेल, वो बहुत साफ है. पिछले कई सालों से ये दो बच्चे उस काम में लगे हुए थे, आकाश और ईशा. अनंत को लेके कुछ डाउट्स थे कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन अनंत को वो काम दिया गया है जो इस कंपनी का कोर काम माना जाता था. ऑयल टू केमिकल में न्यू एनर्जी के काम में उनको लगाया गया है. तो वो भी उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. कैसे जाएंगे पता नहीं चलेगा अभी. लेकिन एक संभावना और है जो अभी कहीं आई नहीं है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं करना चाहिए कि बड़े बिजनेस हाउसेज एक समय पे जाके होल्डिंग कंपनी मॉडल में चले जाते हैं. कि वो फिर एक होल्डिंग कंपनी क्रिएट करते हैं जो सारी कंपनियों को मैनेज करती है या उसको कंट्रोल करती है. और परिवार डे टू डे बिजनेस में उस तरह से भूमिका नहीं रखता है अपनी, जैसे अभी तक देखने को मिली है. लेकिन अगर 3 वर्टिकल्स 3 बच्चों के साथ दिए जा रहे हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि परिवार की भूमिका नहीं होगी. इसका अर्थ यह है कि एक कारोबार को सीखने की जिम्मेदारी एक परिवार के सदस्य को दी गई है. आप इसमें डीप घुस के काम करिए, आगे बढ़िए, देखिए, और बाकी लोग उसमें साइलेंट शेयर होल्डर्स की तरह देखेंगे, ज़रूरत पड़ने पर सलाह देंगे, सवाल पूछेंगे. लेकिन आपको शायद अपने को प्रूव करने का मौका दिया जा रहा है.
अब इनमें से कौन कितना अपने को प्रूव करता है, किस तरह से अपने कारोबार को बढ़ाता है, इससे हो सकता है ग्रुप लेवल पर उसके भविष्य की रूपरेखा भी बने। और ये पिछले 3 सालों में तो ऐसा हो गया रिलायंस में जो कभी देखा ही नहीं देश में, ऐसी चीज़ें हो रही हैं सामने, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे रिटेल हो, या फिर ये जो न्यू एनर्जी का कारोबार है, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रही है इस समय कंपनी। अमित जी, जब आकाश अंबानी ने आज बोलना शुरू किया ना, तो उन्होंने स्मार्ट होम सर्विसेज, इसके अलावा जियो सेट टॉप बॉक्स, कनेक्टेड मोबाइल से कनेक्शन होगा और साथ साथ गेमिंग कंसोल भी उसी में मिल जाएगा, और जियो सिनेमा के ऊपर उन्होंने बोलना शुरू किया। सर, ये बाकी के जो प्लेयर्स हैं इनका क्या होगा? ये जो टाटा और इनफैक्ट टाटा स्काई है अगला बड़ा प्लेयर, भारती है जो दूसरा बड़ा प्लेयर है, तो कंपटीशन बहुत स्टिफ होने वाला है क्या इस इंडस्ट्री में? आई थिंक कंपटीशन तो पिछले 4-5 साल से ही काफी स्टिफ है। काफी जो लोकल प्लेयर्स हैं वो वाइंड अप ही कर रहे हैं, या फिर मर्ज हो रहे हैं इन टाटा स्काई में या जियो में। सो मुझे लगता है कि वो वाला बिजनेस भी सॉर्ट ऑफ 2-3 प्लेयर्स ही रह जाएंगे। एज फार एज OTT कंटेंट इज कंसर्न, दैट इज अ लिटिल डिफरेंट, बिकॉज उसमें 4-5 स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। ऑब्वियसली जी और सोनी का मर्जर हो जाएगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो जाएगा। फिर Amazon है, और हॉटस्टार का थोड़ा टाइसी है, वो किस तरफ बंद करेगा या मर्ज होगा वो भी। और फिर जियो है, जियो ने ऑलरेडी वूड को इनकॉर्पोरेट कर लिया, वायाकॉम के थ्रू जो था वो इनकॉर्पोरेट कर लिया है। सो आई थिंक ये कॉम्पिटिटिव स्पेस हो जाएगा, बट अगले 2-3 साल इसमें और कंसोलिडेशन हो जाएगा, तो रेवेन्यू शेयरिंग जो होती है या रेवेन्यू ग्रोथ जो होगी वो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी तो काफी सारी चीजें फ्री दी जा रही हैं, काफी सारी रेवेन्यू जो है वो सिर्फ एड से आ रहा है, सब्सक्रिप्शन से नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में उसमें सब्सक्रिप्शन कॉस्ट भी ऐड होगी, तो ये रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा पिकअप कर जाएगी, बट उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 से 2 साल और लग सकते हैं। सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? फिर वही पूछूंगा, ये जो है ना ब्रॉडबैंड सर्विसेज, तो पहले बताओ, गदर देख लिया आपने? मूवी का तो शौक है? नहीं, गदर नहीं देखी मैंने, गदर 2 नहीं देख नहीं पाया। तो ये जो अभी हाल फिलहाल की रिलीज हुई है ना, इसमें मैं जो कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, इनका तो बिल्कुल प्लानिंग ऐसी है कि भैया ये जो मूवी नई नई आ रही है फटाफट से ग्राहकों को दिखा दो। तो एक तो मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री के ऊपर इनकी नज़र है, और दूसरी फिर ये जो हम सेट टॉप बॉक्सेस और ये समझते हैं आजकल, जो एक नए तरीके का कंटेंट अब लॉन्च हो गया, तो इसमें ये पकड़ बहुत मजबूत कर देंगे सर, थ्रू दिस जियो टीवी एंड जियो सिनेमा। देखिए, वो बड़ा डिस्ट्रप्शन आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो पहले आपने देखा कि टेलीविज़न के चैनल्स जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन पर बड़ा इम्पैक्ट है, केबल कंपनियों पर, और इसमें जो टाटा स्काई है, डिश है, इस तरह की कंपनियां मुझे लगता है आगे इम्पैक्ट होने जा रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे इस कनेक्टिविटी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आपके पास फाइबर कनेक्टिविटी है तो आपका सारा करियर उसके अंदर आ जाता है। टाटा तो कर रहा है। अभी टाटा ने भी जो नए बॉक्स लगाए हैं वो टाटा प्ले वाले, वो वाईफाई से चलते हैं, लेकिन वो अपना वाईफाई कनेक्शन नहीं दे रहा है, आपके वाईफाई से चल रहा है। तो अगर वो जियो फाइबर से ही चल रहा है और आपके घर में जियो फाइबर पे जिस वक्त आप इंस्टॉल कराते हैं तो आपको टाटा वाले दे रहे हैं वैसे अपना वाईफाई कनेक्शन, ऐसे ही भारती ने भी शुरू किया। वो अलग वाईफाई कनेक्शन अगर आपको लेना है, लेकिन जहाँ जिसने जियो का कनेक्शन ले रहा है, अच्छा इंटीग्रेटेड प्ले आप बोल रहे हो, तो उसको सब कुछ एक ही कनेक्शन में मिल रहा है, या एयरटेल भी दे रहा है। तो आप एयरटेल एक्सट्रीम ले लेंगे तो उसी में आपको OTT और सब कुछ मिल रहा है। तो वो लड़ाई एक दूसरे लेवल पे तो जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहाँ जाके रुकेगी, या जिस तरह का टेलीकॉम में हाल हुआ है, जहाँ 2 कंपनियां तो आपको दिख रही हैं मैदान में है, तीसरी है या नहीं है पता नहीं है। होगा क्या वैसे? तीसरी का क्या होगा सर वैसे? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होगा, बोर्ड आइडिया को किसी चीज़ का इंतज़ार हो रहा है, और वहाँ एक वाइट नाइट प्ले हो सकता है। कौन होगा सर वो वाइट नाइट? अब वो नाम लेना ठीक नहीं है जब तक वो सामने ना आ जाए। देश का होगा, बाहर का होगा सर? नहीं, मुझे तो देश का लगता है, बाहर वालों के बस का नहीं। अगर बाहर वालों के बस का होता तो अब तक वोडाफोन उसको चला चुका होता। वो बाहर वाले अब इस खेल में नहीं आ सकते हैं। अमित जी, क्या होगा बोर्ड आइडिया का सर? नहीं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि वोडाफोन का एक्चुअली सर्वाइवल बहुत मुश्किल लग रहा है, जिस तरह से उसका डेट अभी खड़ा हुआ है, और रेवेन्यूज जो है बहुत ही कम होते जा रहे हैं। एवरी मंथ हम देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स लूज कर रहे हैं, और छोटा मोटा सब्सक्राइबर लॉस नहीं है। 20 लाख, 15 लाख, 22 लाख, इस तरह की फिगर्स आ रही हैं पिछले 3 महीने में जो आई हैं। सो मुझे लगता है कि मुश्किल है। इवन आई डोंट थिंक कि कोई भी प्लेयर इसको ऐसे लेना चाहेगा। एसेट्स में भी स्टिल वर्थ इट टू टेक इट,
बट जो करंट डेट फॉर्म है उसमें कोई भी इसको हाथ लगाना चाहेगा, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। पर अभी खबर तो ये आई थी कि सरकार का थोड़ा पैसा लौटा रहे हैं, स्टॉक चलने लग गया था एकदम से, गुड आइडिया। सर वो इस तरह की हेडलाइन न्यूज पिछले 5 साल से चल रही हैं। आई थिंक वो बीच में जब सरकार ने स्टेक लिया था तो स्टॉक बढ़ भी गया था, डबल भी हो गया था। बट वापस से बिजनेस पे हम ध्यान दें, ये सब न्यूज और हेडलाइन मार्केट में रहेंगी, हम सिर्फ प्योर बिजनेस पे देखें तो इंटरेस्ट ही रेवेन्यू से ज्यादा है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो जो हम अडेप्टेबिलिटी कहते हैं या हम जो इंसॉल्वेंसी कहते हैं अपनी मार्केट भाषा में, वही होना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे तो। सो ये जैसे बीएसएनएल है या एमटीएनएल है जो कि सालों से लॉस मेकिंग है बट एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है गवर्नमेंट की, मुझे लगता है कि इवेंचुअली वोडाफोन भी ऐसा ही एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाएगा। ओके है ऐसे मूड, वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर आप बिजनेस लॉजिक से देखेंगे तो वोडाफोन बचा रहेगा, इसकी कोई केस नहीं बना पाएंगे आप। बचे रहने का एक ही केस बनता है कि किसी आदमी के दिमाग में फितूर है कि मुझको ये कारोबार करना है और उसको दिख रहा है एक बड़ी कंपनी है, उसकी जेब में बहुत पैसा है और उसे यकीन है कि जो काम हम करेंगे वो चला ले जाएंगे। तो और उसके पास वो मसल पावर है जो सामने एयरटेल और जियो के पास है। सर कहाँ ऐसे फिर तो कोई देश का तो नहीं होगा, फिर ऐसा तो कोई नहीं होगा जो मसल पावर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकाबले खड़ी कर दे। वो तो कह रहे हैं कि 5G हमने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रोल आउट कर दिया। ऐसी स्थिति में तो फिर आपको इसका बंद होने का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारे मेरे पास तो आज भी वोडाफोन के कनेक्शन हैं और मैं सोचता रहता हूँ कभी पोर्ट कराऊँ नहीं कराऊँ, लेकिन चलो हो जाएगा तब। लेकिन जो आप अभी अमित जी कह रहे हैं सही बात है, हर महीने 20 लाख सब्सक्राइबर अगर कम हो रहे हैं तो जो पैसा आता भी आपके पास वो भी कम होता जा रहा है। और जो हेडलाइंस आप कह रहे हैं वो आती हैं कि 8,000 करोड़ का बकाया देना है, उसमें से 3,000 करोड़ देंगे ऐसा वादा किया है। कहाँ से देंगे इसके लिए प्रमोटर पैसा जुटा रहे हैं। ये बहुत कोई अच्छी खबर नहीं है। इस वक्त कोई आदमी कहे हाँ साहब 75,000 करोड़ रुपया कहीं से उठाया है जिसमें से इतना पेमेंट करेंगे, इतना कर्जा चुकाएंगे और इतना एक्सपेंशन पे लगाएंगे। कहाँ से आएगा सर? मतलब ना बैंक कहाँ से आएगा तो कहना बड़ा मुश्किल है जब तक ये सामने हो नहीं जाता है। लेकिन जहाँ तक बाजार का सवाल है, जो लोग भी इस वक्त वोडाफोन आइडिया के शेयर पे पैसा लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, वो इसी उम्मीद में लगा रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई एक चमत्कार होगा जो इस कंपनी को रिवाइव करा ले जाएगा। ऐसे में कहीं हम मिस न कर दें, वरना आप अगर फंडामेंटल्स देखिए, उसकी बैलेंस शीट देखिए, तो उस कंपनी में एक पैसा भी लगाने का कोई तुक नहीं दिखता है आज की तारीख में। रिटेल पे आते हैं अमित जी, और रिटेल पे भी अंबानी ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, लेकिन वो ये बोल के गई हैं कि टॉप 100 ग्लोबल रिटेलर्स में रिलायंस रिटेल शामिल है और ये इकलौती ऐसी भारतीय रिटेल कंपनी है जो टॉप 100 ग्लोबल रिटेलर्स में शामिल है। 2.6 लाख करोड़ एनुअल रेवेन्यू है। अभी हाल फिलहाल में फंडिंग भी जुटाई है रिलायंस रिटेल ने। वैल्यूएशन मेरे ख्याल से 8 लाख करोड़ रुपए की आंकी गई है। तो आने वाले समय के लिए ग्रोथ क्या होगी? 19 लाख करोड़ की मार्केट कैप तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की है, तो रिलायंस रिटेल कितनी बड़ी कंपनी बनेगी सर? रजत जी, एक छोटी सी करेक्शन करना चाहूंगा। टॉप 100 नहीं, टॉप 10 रिटेलर्स ग्लोबली में है। और इंडिया में अगर आज की डेट में वो लिस्ट हो जाए तो टॉप 4 कंपनीज में एक्चुअली उस काउंटिंग होगी, क्योंकि अब जो इन्होंने सितंबर 2020 में तक फंड रेज किया था। आपको याद होगा कोविड के फर्स्ट लॉकडाउन में इन्होंने काफी फंड रेज किया था काफी सारी कंपनीज के साथ। उस टाइम पे करीब 4 लाख 4.25 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे किया था, जो कि 3 साल में डबल हो चुकी है, मोर देन 9 लाख हो चुकी है। और जो सबसे बढ़िया पॉइंट एक्चुअली मुकेश अंबानी ने एजीएम में कहा वो ये था कि काफी सारे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स जो हैं वो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है रिलायंस रिटेल में स्टेक लेने का। अभी लास्ट वीक ही कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी स्टेक लिया है $1 बिलियन का फॉर 1% स्टेक। सो उससे वैल्यूएशन ऑब्वियसली 8.8 लाख के करोड़ की करीब वैल्यूएशन आई है इंडियन रुपीज में। और पहले भी काफी वेल्थ फंड्स हैं सऊदी के, सिंगापुर के, यूएई के, जनरल अटलांटिक ने इन्वेस्ट किया है, केकेआर ने इन्वेस्ट किया है, सिल्वर लेक ने इन्वेस्ट किया है। तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस काफी रैपिडली पेस करेगा और इवेंचुअली नेक्स्ट 1.5 से 2 साल में बहुत ही एंटिसिपेटेड रहेगा कि रिलायंस रिटेल भी एक्चुअली डीमर्ज होकर लिस्ट हो जाए एक्सचेंजेस पे
और तो सर एक्चुअली वो निफ्टी का डेढ़ पार्ट हो से सकता दो है। साल देखो, अगर पिछले 4 साल पहले 4 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन थी, अब 8 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन हो गई 4 साल बाद। अगले 2 साल में आप समझते हैं रिलायंस रिटेल जो लिस्ट होगा तो कितनी वैल्यूएशन, 12 लाख करोड़ रुपए। हाँ, हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से नेटवर्क इन्होंने एक्सपैंड किया है वो वैल्यूएशन मल्टीपल्स उसको डिजर्व करेगा। 2 साल में अगर लिस्ट होता है तो ये यहाँ से डबल तो कर ही सकते हैं। ऑब्वियसली ये इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन भी करते रहते हैं। बीच में इन्होंने डुंजो में स्टेक लिया था, लास्ट ईयर इन्होंने मेट्रो खरीदा था, जर्मनी रिटेलर जो था मेट्रो के, वो भी खरीद लिए थे। तो मुझे लगता है कि ये इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी एंड दे आर वेरी एग्रेसिव। ऑब्वियसली जो उनके पास जियो का डेटा है उसको काफी एआई के थ्रू मिंट करते हैं टू पुश मार्केटिंग इनिशिएटिव इन जियो स्टोर्स। और मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी एज सच कुछ प्रॉब्लम है इनमें। मुझे लगता है कि और ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स लाके और एक्सपेंशन करके फिर इवेंचुअली 1.5-2 साल में इसको लिस्ट करेंगे। ओके लेकिन आलोक जी कुछ नहीं छोड़ रहे रिलायंस रिटेल। आप किस सेगमेंट में जाना चाहते हो, उस सेगमेंट में घुस जाएगी रिलायंस रिटेल। मतलब पहले तो प्रीमियम ब्रांड्स को जैसे भी बात हो रही थी उनको कैप्चर कर लिया, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि टियर 2 टियर 3 जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर भी फैल रहे हैं। ऊपर से फिर जियो मार्ट भी लॉन्च कर दिया, तो क्या करना चाहते हैं रिटेल में। रिलायंस कूदता है किसी इंडस्ट्री में तो सबको ग्रुप के स्टोर्स रिलायंस के स्टोर्स में बदल गए। यस वो एक बड़ा एक कहेंगे जंप था इस कंपनी के ऑपरेशंस के लिए। तो रिलायंस कर तो वही रहा है जो आप कह रहे हैं कि आप कहीं से भी कुछ खरीदने निकलिए, घर से निकलिए या घर बैठ के खरीदिए, आपको लगे कि ऑप्शन यही है, आप रिलायंस के भरोसे ही खरीदारी करें। और आप विदेशों में जाके भी देखें, जो बड़े सुपरमार्केट चेन्स हैं वो ऐसे ही ऑपरेट करती हैं कि उनके पास सारे ऑप्शंस होते हैं, सब कुछ खाने से लेकर फर्नीचर तक हर चीज़ आपको एक स्टोर में मिल जाती है। और वहीं आपको बैंक का कार्ड भी मिल जाएगा, वो स्टोर अपना क्रेडिट कार्ड भी चलाता है, वहीं लोन देने वाला भी बैठा होता है। और यहाँ जो एक डेटा का बैकबोन इनके पास उपलब्ध है, जियो और रिटेल के अंदर जो डेटा बन रहा है, आपके कस्टमर का डेटा जमा हो रहा है, उसको जब वो एक साथ कोलेट करके देखते हैं तो बहुत बड़ा एक डेटाबेस है जिसको टैप करने की कोशिश और उसकी योजना में वो लगे हुए हैं। उन्हें लगता है कि वो दूसरे रिटेलर्स को इस रास्ते से एक बड़ी टक्कर दे सकते हैं। और एक हम देख ही चुके हैं, जो मैं अभी कुछ देर पहले फाइनेंशियल मसल की बात कर रहा था, और जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे इन्होंने बात की, वहाँ कहा भी है कि हमारे पास इतनी मसल है जितनी रिक्वायर्ड है इस कारोबार में बड़ा होने सब कुछ तो है रिलायंस के पास। तो वो मसल सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज में नहीं चाहिए होती है, वो मसल इनको रिटेल में, टेलीकॉम में या अपने ट्रेडिशनल कारोबार में हर जगह चाहिए होती है, तो वो दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से देवेंद्र सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार ऑडियो चेक करते हैं देवेंद्र सर का, उसके बाद अमित जी आपसे आखिरी सवाल होगा सर। जियो फाइनेंशियल के ऊपर भी कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल सकती है, आपके कमेंट्स जियो फाइनेंशियल अभी तो जब से लिस्ट हुआ है तब से निवेशकों को जो उम्मीद थी वैसा तो हुआ नहीं, लेकिन आने वाले 3-4 साल में कैसा परफॉर्म कर सकता है? आई थिंक शॉर्ट टर्म में जियो फाइनेंशियल देखना नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही नेसेंट बिजनेस है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। जितने भी सेगमेंट्स में वो लॉन्च करना चाहते हैं, चाहे वो एएमसी हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस, इन सब के अभी लाइसेंसेस इनके पास आने हैं, इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन्हें जियो ऐप में, सुपर ऐप में, और फिर अपने एक्सपेंशन एक्चुअली होगी। तो इसमें ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर कंपनी लिस्ट हो गई तो प्राइस रोज अप डाउन होगा, बट इसमें वैल्यू क्रिएशन लॉन्ग टर्म में ही होगा। तो मेरे को लगता नहीं है कि शॉर्ट टर्म वाले में स्पेकुलेटर जो है वो इसमें फंड कर सकते हैं, बट जो मीडियम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा रुक कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, देखकर कि कैसा एक्सपेंशन हो रहा है, कितना एग्रेसिव एक्सपेंशन हो रहा है और कॉम्पिटिशन इसको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है।
राइट, अमित जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र चोकसी जी से हमारे साथ मौजूद हैं, डीआर चोकसी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। देवेंद्र सर नमस्कार, स्वागत है आपका बिजतक पे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर आलोक जोशी जी भी मेरे साथ इसमें मौजूद हैं, आपने बहुत सारे शोज भी किए आलोक जोशी जी के साथ, तो हम तो डिकोड कर ही रहे हैं सर, लेकिन आपसे बेहतर कौन डिकोड करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज को। पहले तो ये बताएं, ये एजीएम में जो भी अनाउंसमेंट्स हुई है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हैं या फिर आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा, ये दिल मांगे मोर? सो रजत और आलोक, एक चीज के ऊपर मैं हमेशा ध्यान देता हूँ कि रिलायंस की एजीएम जो रहती है उसके अंदर आपको एक रोड मैप दिया जाता है 4 या 5 साल के लिए। तो आई थिंक वो हर समय की तरह ये टाइम के अंदर भी आई थिंक ये रोड मैप कंफर्म किया गया है। एक एक चीज को सामने रखते हैं। जो सबसे बड़ा आज की एजीएम का ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए वो ट्रिगर पॉइंट है जियो प्लेटफॉर्म का। जियो प्लेटफॉर्म अब तक खाली मोबाइल टेलीफोनी के अंदर ज्यादातर सक्रिय था। होम कनेक्टिविटी के अंदर नंबर्स काफी म्यूटेड रहे और एंटरप्राइज कनेक्टिविटी के अंदर भी नंबर्स काफी म्यूटेड रहे, बिकॉज आई थिंक दे हैव नॉट बीन एबल टू कस्टमाइज द सॉल्यूशन फॉर द होम एज वेल एज द एंटरप्राइज। बट ये समय के अंदर जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है जियो एयर फाइबर का, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट कनेक्टिंग about 22 crores home connections going forward, जो एक सबसे बड़ा मैं मानता हूँ ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो होम कनेक्शंस बनेंगे उसके अंदर मीडिया और एंटरटेनमेंट का एक सबसे ज्यादा कंजम्पशन रहेगा, इंटरनेट के माध्यम से कंजम्पशन ज्यादा रहेगा, और जो दूसरी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन एप्लीकेशंस है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ये सब एप्लीकेशंस को आप ये एक सेट टॉप बॉक्स के माध्यम से कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अमाउंट ऑफ डेटा विच इज करंटली अबाउट 25 GB पर यूजर इन द मोबाइल कनेक्टिविटी, मेरा ऐसा मानना है कि दैट डेटा विल एक्चुअली ट्रांसफॉर्म मच बिगर टू अ हायर नंबर ड्यू टू द होम कनेक्टिविटी। एंड जहाँ पे कॉमर्स का सवाल है, एप्लीकेशन नहीं बनती है, तो डेफिनेटली ये डेटा ज्यादा कंजम्पशन होना शुरू होता है। तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द बिजनेस। दूसरी तरफ देखें तो जो एंटरप्राइज के माध्यम से जो कारोबार है, जिसके अंदर आपको ऑन द स्पॉट कनेक्टिविटी जो इंटरनेट के माध्यम से करने को मिलनी चाहिए एंटरप्राइज लेवल के ऊपर, वो कनेक्टिविटी ऑफरिंग द 5G सॉल्यूशन आई थिंक यहाँ पे प्रपोज की गई है। और एट द सेम टाइम क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से ये कनेक्टिविटी को ज्यादा कनेक्ट किया गया है। दैट मीन्स के एंटरप्राइज विल बी एबल टू पुट अक्रॉस देयर डेटा सर्वर्स इनटू द सर्वर प्लेटफॉर्म, द फार्म प्लेटफॉर्म, सर्वर फार्म प्लेटफॉर्म दैट द कंपनी विल बी प्रोवाइडिंग गोइंग फॉरवर्ड। तो ये मेरे ख्याल से आई थिंक एक बड़ा गेम चेंजर होना चाहिए। अगर इसका मैं एक समराइजेशन करता हूँ तो जियो प्लेटफॉर्म के अंदर जो 1 लाख करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू है और 50,000 करोड़ के आसपास का जो उनका EBITDA है, मैं ऐसा समझता हूँ कि नई जो होम ऑफरिंग और एंटरप्राइज ऑफरिंग अलॉन्ग विथ AI बेस्ड सॉल्यूशंस जो एंटरप्राइज के लिए रखे गए हैं, उसको ध्यान में रखते मैं ऐसा समझता हूँ कि इट इज गोइंग टू डबल द साइज ऑफ द कंपनी फ्रॉम व्हाट इट इज करंटली टू द नेक्स्ट 2-3 years टाइम के अंदर करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास का EBITDA आना चाहिए, ऐसा मैं समझ के चलता हूँ 50,000 करोड़ के जगह पे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव मैं ऐसा समझता हूँ कि ये एजीएम के अंदर हमें दिखने मिला है। हाँ, दूसरे भी काफी मुद्दे हैं, मगर आई थिंक आपके साथ बात करते करते उसको एलैबोरेट करता हूँ। वो जो क्योंकि जो वो हमेशा रिलायंस जियो से ही आजकल होती है, तो एक तो ये बताएं कि रिलायंस जियो आने वाले समय के लिए, जैसे हमने कहा कि EBITDA वाइज बहुत स्ट्रांगली ग्रो करते हुए नजर आएगी, वो ये क्यों बोलते हैं कि ये एक टेक कंपनी बनेगी, इसको आप टेलीकॉम कंपनी की तरह मत समझिए, ये एक टेक कंपनी होगी रिलायंस जियो। तो रजत, आई थिंक ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये दिस इज समथिंग व्हिच इज अ गुड म्यूजिक टू एवरीबॉडीज ईयर्स, बट आई थिंक आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट ये जियो का जो कारोबार है, जियो प्लेटफॉर्म का जो कारोबार है, वो मोबाइल कारोबार नहीं है। ये जो कारोबार है वो ज्यादातर कारोबार आप उसको समझ के चलिए कि टेक्नोलॉजी का लेड कारोबार है। तो ये टेक्नोलॉजी लेड कारोबार के माध्यम से देखें तो एक तरफ जैसे मैंने समझा कि एंटरप्राइज सॉल्यूशन आप प्रोड्यूस करते हो, दूसरी तरफ समझा होम बेस्ड सॉल्यूशन आप प्रोड्यूस करते हो। तो ये अलग अलग सॉल्यूशंस आप प्रोड्यूस करते हो इनटू डिफरेंट वर्टिकल्स।
मेरे ख्याल से आई थिंक दैट इज क्रिएटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी। टेक्नोलॉजी का कारोबार इसलिए इसको गिना जाना चाहिए कि अब तक की कंपनी खाली मोबाइल टेलीफोनिक कनेक्शन के साथ में प्रोड्यूस करती थी अपने सॉल्यूशन को। अभी ये कंपनी सेट टॉप बॉक्स माध्यम से 8 या 9 अलग अलग वर्टिकल्स को एड्रेस कर रही है होम कनेक्शन के अंदर, और क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, ब्लॉकचेन के माध्यम से दे आर कनेक्टिंग डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस विद इन डिफरेंट स्पेसिफिक इंडस्ट्री। जहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि दे विल बी ओपनिंग अप डिफरेंट अदर इंडस्ट्री वर्टिकल्स फॉर द डेवलपमेंट पर्पज ऑन देयर प्लेटफॉर्म, विच मीन्स के जो एंटरप्राइज की जो जरूरियात है वो जरूरियात ये प्लेटफॉर्म के ऊपर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आनी शुरू हो जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि करीबन आप 25 GB पर मंथ एवरेज यूजर का डेटा कंज्यूम कर रहे हो मोबाइल के अंदर, तो एंटरप्राइज सॉल्यूशन आने के साथ में आई थिंक दिस डेटा कंजम्पशन will increase manifold. In fact, I think this could possibly transform the entire Jio platform business to its true potential. I would not be exaggerating if I say that 1 lakh crore of EBITDA in next 2 to 3 years time would be just a starting point. ये इनका बेस बन जाएगा, शायद मेरे ख्याल से much larger amount of business that one will be talking about through this technology platform that this company is offering and going to be offering. आलोक सर 1 लाख करोड़ जियो का, सिर्फ जियो का ही। देखिए वो तो जो देवेंद्र भाई बता रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि बहुत सरप्राइजिंग बात है, वो जिस तरह का प्रोजेक्शन दे रही है कंपनी ऐसा है। लेकिन देवेंद्र भाई एक चीज़ जो बाद में स्पीच के एंड में आती है, जहां मुकेश भाई ने वैल्यू क्रिएशन रोड मैप दिया है और वो कहते हैं कि साहब हम हर 10 साल पे एक नया सपना सामने रखते हैं और उस सपने को हमने अभी तक साकार करके दिखाया है। इस वक्त वो 5 कमिटमेंट्स उन्होंने दिए जो कह रहे हैं दे विल ट्रांसलेट इनटू ए न्यू एंड वर्चुअस मल्टी डिकेड वैल्यू क्रिएशन साइकिल डिफाइंड बाई फास्टर ग्रोथ, हायर रेवेन्यूज, बेटर मार्जिन एंड इंक्रीज EBITDA। यहाँ जब ये आ रहे हैं तो इसमें इनका एक पॉइंट आता है कि अब ग्रोथ ड्रिवन बाई ग्लोबल मार्केट पोटेंशियल। अभी तक रिलायंस के बारे में कहा जाता है कि वो देश में बड़ी भारी अपॉर्चुनिटी देखी उसने और यहाँ ग्रो किया। आज की तारीख में जब पूरी दुनिया ग्रोथ चैलेंज फेस कर रही है, उस वक्त अगर रिलायंस कहता है कि हम नेशनल चैंपियन बन चुके हैं, अब हम अपनी स्ट्रेंथ लेवरेज करके अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज़ को ग्लोबल मार्केट्स में ले जाना चाहते हैं और वो भी विदाउट सब्सटेंशियल न्यू इन्वेस्टमेंट, ये आपको कितना फिजिबल दिख रहा है? The entire framework is laid down. जैसे जियो प्लेटफॉर्म की बात करें तो उनके अंदर ब्लॉकचेन बेस्ड कंप्यूटेशन, AI बेस्ड कंप्यूटेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब जो माध्यम से आप कंप्यूटिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू ओनली वन ज्योग्राफी. आई थिंक दिस इज a solution which is available to anywhere else in the world, because this is a technology stack that is being created to be offered to any business enterprises. I am not completely surprised. सिमिलरली आप दूसरे माध्यम के अंदर रिन्यूएबल का कारोबार भी देखें तो रिन्यूएबल का कारोबार भी जो है वो खाली इंडिया के माध्यम के लिए नहीं है. मैं ऐसा समझता हूँ कि जो हिसाब से ग्रीन एनर्जी का इंटीग्रेशन करने जा रही है कंपनी, दैट मीन्स के इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस जिसके अंदर आपको ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, अगर आप ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक यू आर ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रोलाइजर एंड इन द प्रोसेस आई थिंक हाइड्रोजन. So as hydrogen as a static power has got, I think, a large amount of replacement value because of, I think, the clean quality of power that gets produced in the process. ये भी मेरे ख्याल से जो कारोबार है वो डेफिनेटली आई थिंक ग्लोबल कारोबार है, वो लोकल कारोबार नहीं है. मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ओवरऑल दिस एंटायर सॉल्यूशन विच दे आर वर्किंग आउट फॉर डिप्लॉइंग इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू गो अक्रॉस इन टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और तीसरा जो रिलायंस रिटेल का जो कारोबार है जिसके अंदर अमेजोन के माध्यम से हम लोग परिचित है, पर रिलायंस रिटेल का जो डिजिटल कारोबार है, दैट पर्टिकुलर बिजनेस आई थिंक कैन डेफिनेटली आई थिंक मूव आउटसाइड द कंट्री, क्योंकि उसके अंदर आपको आपका जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उसको आपको आगे एक्सटेंड करना है, टेक्नोलॉजी और पेमेंट प्लेटफॉर्म को आपको आगे एक्सटेंड करना है. एंड मल्टीपल अदर कंट्रीज मर्चेंट्स एंड द प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स आई थिंक कैन कम ऑन टू दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म गोइंग फॉरवर्ड, including India-based export possibilities on a B2B basis can also come onto this particular platform. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी इज अनलिमिटेड. मे बी कितने समय के अंदर कितने सर्विसेज या कितने सॉल्यूशंस आप डिलीवर कर पाते हो, that will be the key to watch. But overall, I think I believe that I think this is absolutely doable proposition.
And that is why I like it, that I think they are scaling up the business by creating the underlying infrastructure, which is absolutely very stable and strong infrastructure. रिटेल लिस्ट होगी, अभी तो खैर उम्मीद है कि किसी ना किसी दिन आईपीओ की घोषणा होगी। कितने लाख करोड़ की वैल्यूएशन आप समझते हो? अगेन आई थिंक ये थोड़ा मेरे ख्याल से थियोरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, बट मैं ऐसा समझता हूँ कि हर साल के अंदर करीबन आपको 20% का एवरेज ग्रोथ मिलना चाहिए वैल्यूएशन के अंदर। तो आई थिंक ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस 4 साल के अंदर कंपनी की मार्केट वैल्यू डबल होती है, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ गुड वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर इन्वेस्टर्स। सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अब हम रिलायंस को जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, ग्लोबल स्टेज पे देखेंगे, तो आप किसके साथ इसको कंपेयर करेंगे? आपने कुछ पीयर ग्रुप कंपैरिजन भी किए हैं क्या दुनिया की कंपनियों के जिन बिजनेसेस में ये कम्पीट करने की तैयारी कर रहे हैं? तो आई थिंक आप इमीडिएटली ऑन एप्पल टू एप्पल बेसिस शायद कंपेयर नहीं भी कर पाओ, बिकॉज आई थिंक इंडिया हैज क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर कंपनी इन अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन एंड वेरी डिफरेंट प्रपोजिशन। जैसे जियो प्लेटफॉर्म का कारोबार है, आई थिंक यू कैन नॉट कंपेयर दिस कंपनी विथ ओनली मोबाइल टेलीफोनिक कंपनी और अ होम सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी लाइक वेराइजन एंड कॉमकास्ट, और you can't compare this particular company with an enterprise solution providing companies of the world. Maybe I think they've integrated all these businesses into one. So they are probably, I think, unique in itself as I see it, from the perspective of, I think, looking at this business. और उसके ऊपर उन्होंने जो हिसाब से टेक्नोलॉजी स्टैक डेवलप किया है, आई थिंक दे आर ऑपरेटिंग अबाउट 14 to 15 different technology platforms while offering the solutions, be it AI, be it AGI, be it machine learning, digital learning, artificial AR, VR, MR, and at the same time I think blockchain, ये सब जो टेक्नोलॉजी ब्लॉक्स उन्होंने क्रिएट किए हैं अपने प्लेटफॉर्म के अंदर, तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन फिनोमिना अक्रॉस द ग्लोब. Respective companies in the world may have created different platforms and the solution, but ये company सब platform and the solutions, everything they are bringing up at one point of time, and they are now opening up the source for development of the application, be it application development for education, be it application development for healthcare, be it application development for e-commerce, gaming, media, entertainment, and so and so forth. मेरा ऐसा मानना है कि रिलायंस ने जो जियो प्लेटफॉर्म के अंदर ये जो प्रोपोजिशन क्रिएट की है, वो शायद कोई भी एक कंपनी के साथ में कंपेरेबल नहीं है इमीडिएटली. सिमिलरली रिटेल के अंदर आई थिंक जो हिसाब से उन्होंने ऑन द ग्राउंड डिफरेंट फॉर्मेट के स्टोर्स रखे हैं, और साथ में उन्होंने जो डिजिटल स्टोर का फ्रेमवर्क रखा है, जो ओमनी चैनल प्रेजेंस क्रिएट किया है, वो शायद इमीडिएटली आपको नहीं मिले. Amazon is much bigger, but Amazon के अंदर उन्होंने ऑन द ग्राउंड स्टोर जो है वो कंप्लीटली कम है, अलग अलग फॉर्मेट के स्टोर्स कम है. रिलायंस रिटेल के अंदर वो स्टोर्स अलग से ज्यादा है. तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी एक जगह पे आप ये कंपनी को कंपेयर कर सकते हो. आई थिंक दे आर प्रॉब्ली आई थिंक अ कंग्लोमरेट इन इट्स ओन नेचर, एंड मे बी इट इज अ डिमांड ऑफ द कंट्री फॉर विच दे हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर इकोसिस्टम बेस्ड डेवलपमेंट. मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दैट विल प्रॉब्ली क्रिएट अ यूनिक प्रोपोजिशन इन सेल्फ इन द ग्लोबल मार्केट इफ वन हैज टू लुक एट इट. देवेंद्र सर, जब आपसे पिछली बार बात हुई थी ना, तो प्राइस रिलायंस होनी थी, रिलायंस जियो फाइनेंशियल की, उसके एक दिन पहले आपसे बात हुई थी और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे व्यूअर्स को समझाया था कि किस लिहाज से कंपनी पैन आउट होती हुई नजर आएगी. अभी 261 रुपये 85 पैसे पर लॉट हुए थे. मुकेश अंबानी जी कह रहे हैं एक तरीके का मिनी बोनस दे दिया उन्होंने शेयर होल्डर्स को, लेकिन शेयर होल्डर्स उतने सेटिस्फाई हो नहीं रहे हैं क्योंकि वो ग्रे मार्केट दिखा रहा था 300, स्टॉक हो गया 202. अभी क्या करना चाहिए उस जियो फाइनेंशियल के शेयर का? तो आई थिंक जियो फाइनेंशियल का जो कारोबार है उसके अंदर 4 वर्टिकल बने हुए हैं. सबसे पहला वर्टिकल जो है वो फाइनेंशियल का वर्टिकल है, एनबीएफसी का वर्टिकल है, जिसके अंदर आपकी नेटवर्क के ऊपर आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो. टुडे दे आर probably the larger company after HDFC Bank and SBI. Reliance, that is a Jio Financial Services on the net worth basis, I think is a bigger company than even ICICI and Axis Bank. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक आपकी नेटवर्थ इतनी बड़ी है तो डेफिनेटली आपकी लैंडिंग बुक यहाँ पे से काफी बड़ी बनेगी. मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि आई थिंक B2B लैंडिंग टू मर्चेंट्स एंड B2C लैंडिंग टू इंडिविजुअल कस्टमर्स, वो सबको मिला के आप ये कंपनी की एक साइज देखना चाहते हो, तो आपको शायद अगले 5 साल के अंदर ये 50 लाख करोड़ की AUM बुक की साइज दिखनी शुरू हो जाएगी. मैं ऐसा समझता हूँ कि दैट इज द पोटेंशियल ऑन विच दिस कंपनी इज होल्डिंग. दूसरी तरफ आप देखें तो दूसरा जो वर्टिकल है वो वर्टिकल है इंश्योरेंस का वर्टिकल,
और इंश्योरेंस का वर्टिकल के अंदर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, ये तीन इंश्योरेंस के माध्यम से कंपनी नए प्रीमियम कलेक्ट करने जाएगी। एंड आई थिंक मे बी ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड पेमेंट प्लेटफॉर्म विल इंटीग्रेट द इंश्योरेंस बिजनेस। तो तीसरा जो वर्टिकल है जिसकी उन्होंने एक विस्तार से थोड़ी चर्चा भी की थी, वो एएमसी वर्टिकल है, जिसके अंदर ब्लैक रॉक के साथ में आप नए फंड लॉन्च करने जा रहे हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो शायद ये वर्टिकल के ऊपर भी आई थिंक एक बहुत बड़ा कारोबार मिल सकता है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव कस्टमर्स, they have digital customers in retail, they have digital customers in geo platform, they have digital customers in money control. So I think जितने कस्टमर्स उनके पास है, वो कस्टमर्स को आप शायद एक बार फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ में आप अप्रोच करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये कारोबार इंश्योरेंस का और आपको ये कारोबार जो कंपनी ने सेट किया हुआ है, वो आपको अच्छी तरह से एक तरफ से नए कस्टमर कैप्चर करने में मदद करेगा। And the last vertical is also the payment solutions. Company is basically integrating each and every applications into the payment with the bank. तो ये solution के अंदर भी this is an enabler for generating higher amount of business. तो ये solution के अंदर भी I think the company is getting the larger ability to service customer. मैं ऐसा मानता हूँ कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अनफोल्ड होने में टाइम लगेगा। Maybe I think this is a multi-bagger opportunity, but जो इन्वेस्टर के पास पेशेंस है उनको I think मैक्सिमम रिवॉर्ड मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्वेश्चन, ऑयल टू केमिकल कारोबार के ऊपर कुछ कंसर्न्स हैं क्या गोइंग फॉरवर्ड, या फिर आप कैसे पैन आउट होते देखते हो इनके जो कोर बिजनेस है उसको? क्या आवाज गई नहीं? देवेंद्र सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? देवेंद्र सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, वो एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। देवेंद्र सर, लास्ट क्वेश्चन विल बी, ये आप इनके जो कोर कारोबार है, ऑयल टू केमिकल कारोबार या फिर ऑयल एंड गैस कारोबार, इसकी ग्रोथ कैसे देखते हो? आई थिंक इन्होंने जितने साल पास में लिए हैं उसकी जगह पे आई थिंक मच शॉर्टर पीरियड दे विल टेक इन एक्सप्लोरिंग द गैस। और मेरा ऐसा मानना है कि जो करंट वॉल्यूम है वो शायद यहाँ से 3 गुना हो सकता है अगले 3 साल के अंदर। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी गिनी जानी चाहिए। अनदर पॉइंट आई थिंक एक देखना जाना चाहिए कि जो फीडस्टैक के अंदर दे आर यूजिंग द गैसिफिकेशन प्रोसेस। तो दैट मीन्स कि जो करंटली आज की तारीख में जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करके दे आर लार्जली ड्राइविंग द ग्रोथ। मेरा ऐसा मानना है कि थ्रू द गैसिफिकेशन प्रोसेस आई थिंक दे वुड बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू रिस्ट्रिक्ट देयर इंपोर्ट एंड एट द सेम टाइम इंप्रूव देयर मार्जिन्स। तो ऑयल टू गैस का कारोबार जो है, जो करीबन 60-62 करोड़ का 1000 करोड़ के आसपास का उसका EBITDA आज की तारीख में कंट्रीब्यूशन में आ रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि दैट विल ग्रो एट a speed of around 10% or so, whereas respective other businesses may end up growing about 20% rate of growth also. So दूसरे जो businesses है जैसे जियो प्लेटफॉर्म है, रिलायंस रिटेल है और इवन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, those businesses could grow at the speed of around 20% plus, and I think the oil to chemical business could grow at the speed of around 10%. Oil and gas exploration business can grow probably much faster than what they have grown up till now.
देवेंद्र सर, स्टॉक 2437 के लेवल पे आज पिटाई हो गई और 9 हफ्ते के निचले स्तर पे आ गया। निवेशकों के कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली कुछ ऐसी अनाउंसमेंट आने वाले समय के लिए एक्सपेक्ट हो सकती है क्या? पहले तो आप ये बताएं कि इस शेयर पे क्या किया जाए, लॉन्ग टर्म होल्डर्स इन्वेस्ट करके रखें? दोनों स्टॉक्स पे बता दो, रिलायंस भी बता दो, रिलायंस जियो भी बता। मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म व्यू बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। ऑन द कंट्री आई रिमेन ऑप्टिमिस्टिक एंड बुलिश अबाउट आई थिंक द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। तो उसके अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट का काम है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना, तो शायद रहेगा, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक द ट्रिगर पॉइंट जिसके आपने चर्चा करने की बात की है, ट्रिगर पॉइंट कुड बी द डीमर्जर और लिस्टिंग ऑफ द जियो प्लेटफॉर्म एंड रिलायंस रिटेल। ये दो लिस्टिंग होने के साथ में आई थिंक आपका स्टॉक का भाव बढ़ने के लिए का ट्रिगर मिल सकता है, तो उसके ऊपर इन्वेस्टर को शायद ध्यान रखना पड़ेगा। राइट। और देवेंद्र सर, हमने ना आपका डिस्क्लेमर बहुत अच्छी, लेकिन आप दे दो डिस्क्लेमर अपनी ओर से, क्योंकि हमने सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर ही बात करी है। हमारे अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है, फैमिली का इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेरा खुद का इंटरेस्ट है, माय ऑर्गेनाइजेशन में भी हैविंग इंटरेस्ट। एट द सेम टाइम माय कस्टमर्स में है ओपन पोजीशंस इन द पर्टिकुलर स्टॉक, एंड हमारा जो पीएमएस फंड है उसके अंदर भी एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है। So I would say that I think investors should evaluate carefully their investment activity by taking proper consultation on the investment side. But these are some of the safer part of the disclosure from my side. देवेंद्र सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्पेशल डे बिजतक को अपना समय देने के लिए। तो आलोक सर, ओवरऑल अगर समराइज करें तो एजीएम से देखो, वैसे तो हमको पता ही था कि डिजिटल कारोबार के ऊपर फोकस होगा, रिटेल के ऊपर फोकस होगा, सब सुनना चाहते थे कि आईपीओ के ऊपर कुछ पता लग जाए, नहीं हुआ वैसे। वो तो वो खबर नहीं आई है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, और वो ध्यान देने वाली बात है, जो मुकेश अंबानी के एड्रेस में एक चीज़ उन्होंने कही है, आई शैल कंटिन्यू टू परफॉर्म माई ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 5 more years। चलो 5 साल के लिए वो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 5 साल बाद वो नहीं रहेंगे ये कह रहे हैं, या वो 5 साल के बाद फिर रिव्यू किया जाएगा ये कह रहे हैं। इस सवाल को ओपन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इस बीच वो जो काम कर रहे हैं, आई शैल ग्रूम एंड एम्पावर ऑल द नेक्स्ट जेन लीडर्स एट रिलायंस एंड प्रिपेयर देम फॉर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द फ्यूचर। कि जितने भी न्यू जेन लीडर्स हैं उनकी बात हो रही है, साथ में स्पेशली आई विल मेंटर आकाश, ईशा एंड आनंद सो दैट दे कैन प्रोवाइड कलेक्टिव लीडरशिप एंड डिपेंडेबली टेक रिलायंस टू ग्रेटर हाइट्स ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यू इन द डेकेड्स अहेड। तो ये बेसिकली भविष्य की बात कर रहे हैं। जो बड़ी निराशा है वो यही है कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आज ऐलान कर देगा, या मुकेश अंबानी के भाषण में जिक्र आएगा कि रिटेल की लिस्टिंग कब होगी या जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग कब होगी। लेकिन मुझे लगता है कुछ समय आ सकता है उसमें, और हो सकता है कंपनी ने सोचा हो कि आज के दिन ये ऐलान न किया जाए, क्योंकि ये कंपनी थोड़ा सरप्राइज में भी यकीन रखती है, आपको ये ध्यान रखना होगा। ये कई बार ऐलान ऐसे समय आता है जब आप उसकी उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं। अभी तो थोड़े दिनों पहले ये हो गया था जब लिस्टिंग होने वाली थी ना रिलायंस जियो फाइनेंशियल की, तो उससे पहले फुटसी के इंडेक्स से बाहर निकलने की खबर आ गई थी। उनको अपनी स्टेटमेंट वापस लेनी पड़ेगी, अरे भाई ये क्या हो गया, लिस्टिंग कहाँ से आ गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी स्पीड से लिस्टिंग करा देंगे, पर खैर अंबानी तो ये ओवरऑल यही। वैसे आपको ऐसा था कि दिवाली के आसपास लिस्टिंग हो गई, एकदम से कैसे आ गई? अभी तो चर्चा तो थी कि, लेकिन फिर मुझे लगता है यही था कि फुटसी इंडेक्स से बाहर हो रहा है, ये चिंता यहाँ जगी होगी, इस वजह से इसको एक्सेलरेट किया गया। वरना एक कंपनी आए बिजनेस में और उसके बाद, और दूसरी फिक्र ये है कि वो जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो समस्या है कि वो उनके मैंडेट में नहीं बैठती है, इसलिए उसको अनलोड करते जा रहे हैं लगातार, जिसकी वजह से वो शेयर कहीं रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। ये एक समस्या उसके बीच में दिखाई पड़ रही है ज़रूर। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज के बाज़ार भाव को लेके इस पर कोई ख़ास जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं वो लोग चिंता कर रहे होंगे कि ये कहाँ गया है। उनकी नज़र जहाँ थी वहीं रहेगी, वो जियो पर और रिटेल पर नज़र रखेंगे, उसके वैल्यूएशन को देखते रहेंगे और सोचेंगे कि कब वो लिस्ट होता है और उस वक्त हम क्या करें। ओके, लेकिन अभी हाल फिलहाल के जो नतीजे आए हैं ना, उसमें भी जो मेजर फोकस रहता है वो जियो के ऊपर ही रहता है और रिटेल के ऊपर रहता है। ऑयल एंड गैस कारोबार पे तो वैसे भी थोड़ा स्थिति कोई उतनी नहीं, हालांकि वो अभी कोई छोटा कारोबार नहीं है, इनका बहुत बड़ा कारोबार है। जिस तरीके से बात हो रही है 8 लाख करोड़ की फंडिंग जुटा ली कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से, मतलब उस वैल्यूएशन पे फंडिंग नहीं जुटाई, उस वैल्यूएशन पे फंडिंग जुटाई। 1 बिलियन बात यही है कि आप अभी हो सकता है अगले कुछ दिनों में आपके पास शाम के समय SMS या व्हाट्सएप आने शुरू हों रिलायंस की कॉम टीम से
कि अब इसने और 1% हिस्सा खरीदा, इसने और 2% हिस्सा खरीदा, इसका वैल्यूएशन अब इतना हो गया, जो करीब 1.5 साल पहले अगर आपको याद हो, 1.5 और ज़्यादा हो गया थोड़ा समय, जब जियो प्लेटफॉर्म्स के स्टेक सेल हो रही थी या रिलायंस रिटेल वेंचर्स की स्टेक सेल हो रही थी, उस वक्त भी ऐसा ही हाल था कि रोज़ आ जाता था कि आज 50,000 करोड़ का कमिटमेंट आ गया, आज 1 लाख करोड़ का कमिटमेंट आ गया, जिसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने डेट फ्री होने का ऐलान किया था। लेकिन साथ में उन्होंने इन 2 बिजनेसेस के लिए वैल्यूएशन भी क्रिएट किया है। तो ये जियो फाइनेंशियल सर्विस तो पूरा ही एक आउट ऑफ द ब्लू आया है। अगर आप अब साल भर पहले किसी से पूछते कि इनका कौन भविष्य का प्लान कहाँ है, तो उसमें JFSL का जिक्र कहीं नहीं होता था। ये तो इस तरह ये जो केवी कामत साहब आए हैं तो उसके बाद समझ में आया था कि हाँ ये एक और वर्टिकल है जिसको ये वो, और कामत के आने का मतलब है कि थोड़ा गंभीर हैं इस किस्से को लेके। वो उस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने इस देश के सबसे सक्सेसफुल बैंक्स में से एक ICICI बैंक को उस मुकाम पे पहुंचाया जहाँ आज है। बीच में उसमें बहुत सारे सवाल जवाब हुए हैं, लेकिन ओके राइट। हमारे साथ गुरमीत चड्ढा जी भी जुड़े हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। गुरमीत जी नमस्कार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर वैसे अभी जो मुकेश अंबानी जी है ना, वो 12वें पायदान पे, लिस्ट मैंने खोल के रखी हुई थी ब्लूमबर्ग इंडेक्स की, तो यहाँ पर मुकेश अंबानी जी दिखते हैं 12वें पायदान पे $92 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ। लेकिन उसके बाद जब मैं ढूंढना शुरू करता हूँ ना, तो अभी एक जो कल भी बहुत एक्टिव होने वाले हैं हम, कल सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला, जी हाँ सुप्रीम कोर्ट में ना वो सुनवाई है, तो नंबर आ रहा है सर गौतम अदानी जी का नंबर 18 पे है, 64 बिलियन। तो फ़र्क बहुत ज़्यादा हो गया सर, पहले तो गौतम अदानी बहुत ऊपर था, फिर मुकेश अंबानी। हाँ, लेकिन ये जो है ना, अब ये लिस्ट तो खेलने के लिए, खबर के लिए ठीक होती हैं, लेकिन ये लिस्ट दरअसल इनका कोई रियल मतलब होता नहीं है। ओके राइट। मेरे ख्याल से गुरमीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन किसी और लिंक पे मेरे को उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मैं एक बार वो लिंक ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ। दिखाई तो पड़ रहे हैं। हाँ, गुरमीत चड्ढा जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुरमीत जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आलोक जोशी जी भी इस समय मौजूद हैं और सवाल रिलायंस एजीएम पे आपसे पूछेंगे। सर रिलायंस एजीएम में जो भी अनाउंसमेंट हुई आपको कैसी लगी, और क्या ये अनाउंसमेंट्स आपकी उम्मीद के मुताबिक है या फिर आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार? हाँ, तो धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। 4-5 चीजें जो थी वो मेरी नजरों में स्टैंड आउट करी। एक, कंपनी का क्लियर सक्सेशन प्लान है। नीता अंबानी जी ने बोर्ड में स्टेप डाउन किया, और आकाश, अनंत और उनकी जो सिस्टर है उन्होंने ज्वाइन किया बोर्ड को। सेकंड, उन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का पूरा जो रोड मैप है वो क्लियर किया। वो अंडर बैंक सेक्शन को, MSMEs को, मर्चेंट्स को, छोटे मर्चेंट्स को, मतलब लार्जली वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे ज्यादा काम करेंगे। उनका बाकी आगे भी प्लान्स हैं, म्यूचुअल फंड को लेके, इंश्योरेंस को लेके, ऐसे और ब्रोकिंग को लेके। पेमेंट बैंक्स का भी लाइसेंस है जियो के पास। तीसरा जो मुझे एक चीज अच्छी लगी, उन्होंने रिटेल बिजनेस को बोला कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस होगा, सबसे ज्यादा EBITDA क्लॉक करेगा, पूरे पूरे क्लियर प्लान स्पेसिफाई आउट करें। तो ये 2 बिजनेसेस हमें नजर में रखने चाहिए, जियो फाइनेंशियल और रिटेल। चौथा, उन्होंने बात करी गीगा फैक्ट्री की, बैटरी की और क्लीन एनर्जी स्पेस की। एक अच्छा बात इसमें था कि बहुत बड़ा कोई कैपेक्स का फिगर नहीं दिया। स्ट्रीट को एक थोड़ा सा हमेशा वरी था कि रिलायंस में वापस से डेट बढ़ेगा उनके क्लीन एनर्जी प्लान्स को लेकर। आई थिंक वो उन्होंने अच्छा बैलेंसिंग एक्ट किया। और पांचवा जो पॉजिटिव था, वो जो उन्होंने वायरलेस फाइबर की बात करी कि वो हॉटस्पॉट जैसे से हर जगह कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड बचाएंगे। आई थिंक इसके काफी बड़े इम्प्लीकेशंस होंगे आगे जाके इंटरनेट पेनिट्रेशन को लेके, और वो बेनिफिट भी करेंगे रिटेल बिजनेस को भी और बाकी बिजनेस को भी। एक जो मेरा डिसअपॉइंटमेंट रहा, वो टाइमलाइन उन्होंने नहीं दिया
वैल्यू क्रिएशन का कि कब तक डीमर्जर करेंगे रिटेल का या जियो का या न्यू एनर्जी बिजनेस में कोई उनके प्लान्स है मोनेटाइजेशन के। यहाँ मुझे लगता है स्ट्रीट थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ होगा क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक टाइमलाइन मिलेगा कि ये फ्यूचर बिजनेसेस कब लिस्ट होंगे। इस वजह से आप देखिए शेयर प्राइस भी थोड़ा सा, हालांकि वो होता है एजीएम में, अपने डे के लो पे बंद हुआ, अच्छी मार्केट पे 1.25% नीचे बंद हुआ, जबकि जब तक एजीएम से पहले शेयर जो था वो एंटिसिपेशन में ऊपर था। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है नियर टर्म था, बट लॉन्गर टर्म प्लान जो है उनका वैल्यू क्रिएशन का। इनफैक्ट मुकेश अंबानी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली एंड में, उन्होंने एक स्लाइड दिखाई वैल्यू क्रिएशन की कि जितना पिछले 45 साल में रिलायंस ने वेल्थ क्रिएट किया है, इस दशक में उससे कई गुना ज्यादा क्रिएट करेगा। तो ये एक लाइन काफी रियश्योरिंग थी जो उन्होंने। राइट। और जितना इनफैक्ट जो हम देख रहे हैं ना, हम सर ये देख रहे हैं गुरमीत जी, कि जो नए जनरेशन के जो बिजनेसेस है ना, ये ज्यादा रिलायंस इंडस्ट्रीज में अब कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है उन्होंने। और हम देख रहे हैं, अभी हम बात भी कर रहे थे अलग अलग जानकारों से, वो ये कह रहे थे कि एबिटा ग्रोथ ऑफ रिलायंस रिटेल विल बी ह्यूज। ऊपर से जो जियो एजीएम शुरू हुई थी, तो इसमें आपने शुरू में देखा ही होगा कि कितना ज्यादा समय दिया पहले मुकेश अंबानी साहब ने, उसके बाद आकाश अंबानी ने जियो जो है उसके ऊपर, उस प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो ये साफ तौर पे समझ में आता है कि डिजिटली जो अब रिलायंस की जो ग्रोथ होगी डिजिटल सेक्टर में, वो अनपैरेलल होगी। ये एक टेक कंपनी बनेगी जियो, रिलायंस जियो। तो आप इस पे क्या देखते हैं, क्या गोइंग फॉरवर्ड इनके ऑयल एंड गैस बिजनेस और ऑयल टू केमिकल कारोबार को अलग देखा जाए, दैट इज कोर कारोबार पता है, लेकिन जो ग्रोथ होगी वो रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल के बलबूते होगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि एनर्जी बिजनेस में भी उतना ग्रोथ होगी, हाँ लीड करेगा, क्योंकि टेक बिजनेस को वैल्यूएशंस अच्छे मिलते हैं, ग्रोथ ज्यादा फास्ट होती है। और आप देखिए ऑलरेडी जो उनका, अगर आज आप 100 रुपए देखें एबिटा, तो करीबन करीबन 46 से 47 रुपए न्यू एज बिजनेस से आता है, जिसमें जियो रिटेल और न्यू एज बिजनेस है। 53 रुपए अभी भी ऑयल टू केमिकल बिजनेस से आता है जो उनका एबिट है। और एनर्जी बिजनेस में भी उनके काफी बड़े प्लान है। और एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, आप फॉर्म चेंज कर सकते हैं रिन्यूएबल से नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल का। और वो ग्रीन हाइड्रोजन का उनका लक्ष्य बहुत एग्रेसिव है, एक डॉलर पर किलोग्राम का उनका लक्ष्य है हाइड्रोजन प्रोवाइड करना। सोलार और विंड पे उनका काफी एग्रेसिव प्लान है। बैटरी की गिगा फैक्ट्री की उन्होंने बात करी 2026 तक। तो एनर्जी के प्लान्स भी काफी मजबूत हैं। एक स्ट्रीट को कंसर्न जरूर है कि इतना खर्चा करेंगे एनर्जी में, तो उसके लिए मोनेटाइजेशन कब करेंगे। तो वो अनाउंसमेंट थोड़ा सा मुझे लगता है लैकिंग थी। अगर एनर्जी बिजनेस में भी कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर जैसे रिटेल और जियो में आया है, आगे आएगा, और उससे भी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। बट मैं ये मानता हूँ कि नियर टर्म में जो ग्रोथ है वो जियो और रिटेल लीड करेंगे। थोड़ा बहुत जियो फाइनेंशियल भी करेगा क्योंकि एक बहुत अच्छी टीम बना रहे हैं वो। और ये आपस में इनकी सिनर्जी है। आप देखिए वो बात कर रहे हैं कि वो 25 करोड़ लोगों को स्मार्टफोन देंगे, जो 1,000 रुपए का स्मार्टफोन है। तो अगर आप 25 करोड़ लोगों को इंटरनेट मुहैया कराएंगे, तो उसका इम्पैक्ट उनकी स्पेंडिंग पे भी है, उनकी लेंडिंग पे भी है, उनके डेटा यूसेज पे भी है। तो एक बहुत बड़ा सेल्स फनल बन रहा है ये, जिसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरनली भी आप उस डिमांड ड्राइव कर रहे हैं और कंजम्पशन ड्राइव कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने बाहर भी वो टेक्नोलॉजी देने की बात करी, ग्लोबली बात करी कि वो क्या 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 करना चाहते हैं एआई पे। तो मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ। और जियो एक ऐसा ब्रांड है जो इंडिया का पहला बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो सर अभी ये बात हो रही थी, आलोक जी ने भी सवाल पूछा था देवेंद्र सर से कि कंपटीशन किस इंडस्ट्री में देखें रिलायंस को अब? टेलीकॉम में देखें, रिटेल में देखें, ऑयल एंड गैस में देखें, या फिर नई एनर्जी वाले जो सेक्टर्स उसमें देखें? और ग्लोबली कौन सा ऐसा प्लेयर है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को कम्पीट कर रहा है? देखिए ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। आप किसी भी ग्लोबल एनर्जी कंपनी ने इस तरीके से न्यू एज बिजनेस में अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किया है। आप सऊदी अराम को देख लीजिए, आप शेल देख लीजिए, आप जो भी बड़ी ग्लोबल कंपनीज है देखिए, ये आई थिंक एक यूनिक मॉडल है। और रिलायंस का जो एक चीज स्टैंड आउट करती है कि वो एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, जो कहते हैं वो करते हैं। जियो में भी आप देखिए उन्होंने 3-3.5 लाख करोड़ का केपेक्स किया। एक टाइम पे शेयर ने भी अंडर परफॉर्म किया 2013 से 18, बट अब देखिए कितना अच्छा उभर के आया है। 45 करोड़ सब्सक्राइबर, 1.25 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करता है। तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअली हर बिजनेस को देखना चाहिए। और इमीडिएट जो मुझे लगता है, जो मुझे प्रेजेंटेशन के टाइम लगा, वो लगता है कि उनका फोकस है पहले रिटेल पे आने वाला है, क्योंकि रिटेल को उन्होंने बोला कि इसका सबसे ज्यादा EBITDA होगा, ये फोर्थ लार्जेस्ट होगी।
और जियो फाइनेंशियल ऑलरेडी ट्रेड होना शुरू हो गया, अभी टी सेगमेंट में है, ग्रेजुअली नॉर्मल इंडेक्स में आएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है शायद इमीडिएट बेसिस पे हमें नजर रखनी चाहिए, और थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे मुझे लगता है जियो और एनर्जी पे नजर रखनी चाहिए। सर आप इतना बड़ा वेल्थ फंड संभालते हो, तो रिलायंस रिटेल पे माफ कीजिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे एक तो आने वाले समय के लिए अगर आप कुछ टारगेट्स शेयर कर पाओ तो ऑब्वियसली ग्रोथ स्टोरी हमें पता है, लेकिन कुछ कंसर्न है क्या, क्योंकि ये 9 हफ्ते के निचले स्तर पे पहुंच गया। और दूसरा, जब से रिलायंस जियो फाइनेंशियल भी लिस्ट हुआ है ना, वो तो अभी चढ़ना शुरू हुआ है, बात हो रही थी 300 की, हो गया है 202, अभी धीरे धीरे करके चढ़ना शुरू हुआ है। तो क्या करा जाए इन स्टॉक्स पे? देखिए, ये ना रिलायंस एक बहुत ही बड़ी कंपनी, और थोड़ा आपको लॉन्ग टर्म तरीके से इसको देखना पड़ेगा। और कई बार कंपनीज में फेसेस आते हैं जब कंपनी अच्छा नहीं करती, और हर हर महीने हर साल ऊपर नहीं जाती है। 2013 से 18 में बिल्कुल मूवमेंट नहीं आई थी, लेकिन कोविड के बाद से वो 3 गुना हो गया, 800-900 से 2700 तक। और अभी आप देखिए, बिफोर जियो फाइनेंशियल वो करीबन 2200-2300 रुपए पे था। आज डीमर्जर के बाद 2400-2500 का रिलायंस है, और 200-250 का जियो फाइनेंशियल है, क्योंकि आपको 1:1 शेयर मिला है। थोड़ा सा अगर आप नजरिया को थोड़ा एक्सपैंड करेंगे तो आपको दिखेगा कि वैल्यू क्रिएशन हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। हाँ, हर महीने हर क्वार्टर नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि मैं जियो फाइनेंशियल को लेके लॉन्ग टर्म में बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ। देखिए, ओवरनाइट लोन बुक नहीं बनेगी, लोन बुक बनाने के लिए कई साल लगते हैं। बजाज फाइनेंस को आज 2.5 लाख करोड़ लोन बुक पहुंचने पे 10 साल से ऊपर लगा। तो आप अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जियो 2 साल में वो कर देगा, तो ये होने वाला नहीं है। और अगर करेगा तो डरने की जरूरत है, क्योंकि लोन अगर इतनी स्पीड से आप डिसबर्स करेंगे तो आपके एसेट क्वालिटी इश्यूज होंगे, एनपीएस होंगे। तो समय लगेगा जियो फाइनेंशियल को भी बुक बिल्ड करने में, बनाने में। सिमिलरली रिटेल भी धीरे धीरे एक्सपैंड, आप देखिए कितने पिछले साल उन्होंने 30 एक्विजिशंस किए, 50 करोड़ उन्होंने गारमेंट बेचे हैं पिछले साल, पता नहीं कितने लाख लैपटॉप बेचे। तो स्केल धीरे धीरे अब उनका डेवलप हो रहा है। रिटेल में पहली बार उन्होंने 2020 में पैसा रेस किया था, आपको याद होगा, करीबन 4 लाख करोड़ की वैल्यूएशन। अब जो पैसा आया है वो 8 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे आया है। तो रिटेल भी डबल हुआ है पिछले 3 साल में। तो थोड़ा सा लंबा नजरिया अगर आप रखेंगे 3 से 5 साल का, तो मेरे हिसाब से काफी वैल्यू अनलॉकिंग बची है। रिलायंस में सारे बिजनेस ग्रेजुअली लिस्ट होंगे, सक्सेशन प्लानिंग सामने है हमारे। जो तीनों किड्स हैं उनको शायद एक एक बिजनेस इवेंचुअली मिलेगा। और तो बट इमीडिएट बेसिस पे मेरा कोई टारगेट प्राइस नहीं है। बाजार किसी को नहीं पता होता है, सब इंटेलिजेंट गेस करते हैं। बट मैं कंस्ट्रक्टिव हूं, मैं ये कह सकता हूँ। मैं जियो फाइनेंशियल को लेके शायद थोड़ा ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हूँ 4-5 साल के नजरिए से, और रिलायंस को लेके थोड़ा मैं मॉडरेट कंस्ट्रक्टिव हूँ। बट मैं इसको 3 से 5 साल के नजरिए से देखता हूँ, मैं इसको इमीडिएट नजरिए से नहीं देखता। एक दूसरी चीज, मैं जो वैल्यूएशन पॉइंट जो इन्वेस्टर को देखना चाहिए, तो देखिए आज अब रिटेल का वैल्यूएशन $100 बिलियन है, जियो का वैल्यूएशन करीबन करीबन 120-125 बिलियन डॉलर है। तो टोटल इन्हीं तो बिजनेस में रिलायंस का वैल्यूएशन आ गया है। 18 लाख करोड़ का रिलायंस का वैल्यूएशन है, तो लगभग लगभग 220 बिलियन डॉलर। एनर्जी बिजनेस जो 50% प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करता है, उसका इसमें रोल ही नहीं है। तो ऑब्वियसली कंपनी थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है करंट प्राइस पे। बट ये कब अनलॉक होगा ये किसी को नहीं पता है, बट 3-4 साल में होगा। हाँ, ये बिल्कुल। तो मतलब ये जो अभी मिनी बोनस मिला है रूप में, जो एक शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर एक शेयर रिलायंस जियो फाइनेंशियल का मिला है, तो निवेशक घबराएं नहीं। आने वाले समय के लिए जब वैल्यू अनलॉकिंग होगी, वैल्यू अनलॉकिंग क्या कि डीमर्ज होती है कंपनी, सपोज करो रिलायंस रिटेल डीमर्ज हो गई और रिलायंस जियो डीमर्ज हो गई, तो उसके भी शेयर धारकों को मिलेंगे। इस लिहाज से बार बार जो भी हमारे साथ जानकार जुड़ते हैं बोलते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर में वैल्यू है, आने वाले समय के लिए वेल्थ जनरेटर साबित होगा। लेकिन सर बाजार तो यही सोच के चल रहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आज मुकेश अंबानी 46वीं एजी में कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देंगे, तो सबका मूड माहौल ठीक था। मार्केट वैसी ही काँप रही है पिछले कुछ दिनों में। तो एक आपका आउटलुक बताते जाते कि मार्केट पे क्या करें इस समय। स्टॉक मार्केट ये जो हम 19,200 19,300 के लेवल्स पे जाके फंस गए अभी, तो क्या ये कॉन्फिडेंस है भी कि यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करें, या फिर करेक्शन आने वाली है और नीचे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाएगा? देखिए, करेक्शन एक अच्छे रनअप के बाद थोड़ा सा मार्केट में कई बार कंसोलिडेशन आता है। बाजार में हमने देखा कि 17,000 से 19,500 कम ड्यूरेशन में गया, और 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट आपको याद होगा 2021 में 18,800 का नया हाई बना। तो ये कहना कि बाजार एकदम हाई पे वो भी सही नहीं है, क्योंकि 2 साल बाद वही आया है जहां शायद 2021 में था। बट इस दो सालों में अर्निंग बढ़ा है। पहले बाजार 27 के अर्निंग मल्टीपल पे था, अभी अब 20-21 के अर्निंग मल्टीपल पे है। तो अर्निंग ग्रोथ भी हुई है साथ में पिछले 2 साल में। पिछले क्वार्टर में भी अगर आप एक्स फाइनेंशियल्स देखें तो 20% के आसपास का एबिटा ग्रोथ आया है। तो इकोनॉमी का आउटलुक अच्छा है। और मेरे को ये नहीं पता कि नियर टर्म में बाजार कहाँ जाने वाला है, ये किसी को नहीं पता होता है। लेकिन ओवरऑल जो इंडिया को लेके मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ।
और मुझे लगता है ये एक इन्वेस्टमेंट साइकिल में इंडिया आया है बहुत टाइम बाद। आपको केपेक्स देखने को मिल रहा है, आपको गवर्नमेंट लेड इन्वेस्टमेंट ड्राइव देखने को मिल रही है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है बड़े सेक्टर्स में, और हाउसिंग डिमांड बहुत रोबस्ट है। ऑटो 5-6 साल के एक रफ पीरियड के बाद वापस आया है, तो इकोनॉमी में ग्रीन शूट्स हैं काफी सारे। और मुझे लगता है कि इंडिया काफी अच्छा करेगा। लेकिन हर बड़े अच्छे फेज में भी बड़े करेक्शन आते हैं। रजत जी, आपको 2003 से 7 याद होगा, सेंसेक्स जो है 6,000 का 21,000 हो गया था, 3 गुना से ज्यादा हो गया था उस पीरियड में, सबसे बड़ा बुल मार्केट माना जाता है। उसमें भी 4 करेक्शन आए थे 10% के। एक करेक्शन तो 32% का था मई और जून 2006 में। बाजार में लोअर सर्किट लगा था एक दिन, मुझे याद है, शायद 12 जून 2006 की बात है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो करेक्शन अपॉर्चुनिटी है। इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां हमें हमें करेक्शंस को थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाहिए। ये एक ऐसी जगह है जब सेल लगती है तो लोग भाग जाते हैं। इंडिया आप देखिए, आज सेंसेक्स 100 का 65,000 है, और 13-14% का एनुअलाइज रिटर्न है। हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ भी लगभग उतनी है, 12-13% की ग्रोथ है। तो मुझे नहीं लगता कि उस हाइपोथेसिस में कुछ चेंज हुआ है कि भारत 12-13%, 6-7% ग्रोथ, 5% इन्फ्लेशन, मुझे नहीं लगता उस मैथ्स में कोई चेंज है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये हर साल 12-13% नहीं आएगा। तो अगर आप 3-4-5 साल का एक ब्लॉक लेंगे तो मार्केट बहुत अच्छा लगता है मुझे अभी भी इस लेवल। तो सर, अगर मार्केट इस लेवल पे अच्छा लगता है, फिर चलो एक करेक्शन भी आ गई, तो आखिरी कमेंट्स आपके। कंप्लायंस इश्यूज हैं, उनको पता है, लेकिन कौन से सेक्टर्स लीड करेंगे या फिर कौन सी थीम्स, और अगर स्टॉक्स बता दो तो और भी बढ़िया। डिस्क्लेमर आप जितने मर्जी दे दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, हमें 3-4 थीम्स बहुत अच्छी लगती है। पहली थीम, जैसा मैंने आपको बोला, हमें हाउसिंग और बिल्डिंग मटेरियल थीम बहुत अच्छी लगती है। कोविड के बाद से ना एवरेज इंडियन घर भी ले रहा है और घर को अच्छा भी रखना चाह रहा है। तो जो घर नहीं ले रहा है वो घर में मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। आज हम एक किचन या बाथरूम में काम कराते हैं तो लाखों रुपए स्पेंड कर देते हैं। तो जितनी भी बिल्डिंग मटेरियल थीम्स हैं ये हमें अच्छी लगती है, चाहे केबल्स एंड वायर्स है, टाइल मेकर्स हैं, सैनिटरी वेयर मेकर्स हैं। हम मेरी एक पसंदीदा होल्डिंग है पॉलीकैब कजारिया, ये हमें अच्छा लगता है और मैं कई सालों से इनमें इन्वेस्टेड हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैंने अभी ये शेयर खरीदे। तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करिए, बट मैं लंबे समय के लिए इसमें इंटरेस्टेड। सेकंड, हमें लगता है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में हो रहा है ये बड़े अलग स्केल पे हो रहा है। अब इंडिया में आज से 10 साल पहले सिर्फ 8 करोड़ लोगों का सिविल स्कोर था जो एलिजिबल बोरोअर्स थे, आज वो 20 करोड़ हो गया है। तो नंबर ऑफ बोरोअर्स 2.5 गुना हो गए। और जियो फाइनेंशियल जैसे प्लेयर्स के आने के बाद बजाज फाइनेंशियल जो है एग्रेसिव हो रहा है, और सारे डिजिटल लेंडर्स हैं, पूना वाला है, कई सारे हैं। ये नंबर बढ़ने वाला है। तो जो एक फ्रूट वेंडर है या आइसक्रीम वाला है या वेजिटेबल वेंडर है या आपका डोमेस्टिक हेल्प है, इनको जो पहले फॉर्मल लोन नहीं मिलता था, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अच्छी डिजिटल एनबीएफसी, यूपीआई की वजह से, डिजिटल ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से उनको लेंडिंग कर पा रहे हैं। इनको पहले बाजार से इनफॉर्मल दरों पे, बहुत हाई दरों पे ब्याज पे पैसा उठाना पड़ता था। आज वो फॉर्मल, और क्रेडिट क्रिएशन जब इकोनॉमी में होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंजम्पशन पे होता है। तो मुझे फाइनेंशियल इंक्लूजन थीम बहुत अच्छी लगती है। इसमें कई सारे आप लीडिंग बैंक्स देख सकते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, अच्छे बैंक्स हैं। थोड़े से आप छोटे बैंक्स देख सकते हैं और लेंडर्स देख सकते हैं, जियो फाइनेंशियल जैसे पूना वाला की तरह, काफी सारे अच्छे इसमें प्लेयर्स हैं। तीसरा, मुझे कंजम्पशन, मुझे लगता है जैसे जैसे आप इकोनॉमी ग्रो करती है आपका डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती है। तो आप ऑटो हो गया, आपका फूड हो गया, आपका ट्रैवल हो गया, इस पे आप ज्यादा खर्च करते हैं। तो आप देखेंगे अगर एसयूवी सेल्स कितनी बहुत बहुत स्पीड से पिकअप हो रही है। तो मैं पैसेंजर कार्स को लेके बहुत बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ। लगभग 2 करोड़ लोग हैं जो बाइक से कार में अपग्रेड करना चाहते हैं। इंडिया साल की 35 लाख गाड़ियां बेचता है। अभी भी हम प्री कोविड नंबर पे अब आए हैं, इस साल आए हैं। तो इसमें अच्छी बढ़ोतरी होगी अगले कुछ सालों में। तो मुझे 4 व्हीलर कंपनीज अच्छी लगती हैं, एमएनएम है, टाटा मोटर्स है। इनके जो एंसिलरीज हैं, जो इनके सप्लायर्स हैं, अगर आप पूरा वैल्यू चेन मैप करेंगे तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए, बहुत सारी कंपनी लिस्टेड नहीं है, चाहे टोयोटा है, hyundai है, किया है, निसान है, लेकिन इनकी ऑटो एंसिलरीज लिस्टेड है। तो ऑटो एंसिलरीज आपको कंप्लीट प्ले देते हैं सेक्टर का, और 4 व्हीलर आपको एक लिमिटेड प्ले देगा, जो भी मेन ओईएम होगा। तो हमें ऑटो अच्छा लगता है। और चौथा, एक जो इंडिया में रिवाइवल हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, वहां पे हम बहुत बुलिश हैं। स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, आज एप्पल इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आईफोन बना रहा है। हमें काफी सारे डिफेंस में, हमें मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, टेक्सटाइल्स में दिख रही हैं। तो एक मैन्युफैक्चरिंग एक चौथा सेक्टर है जो हमें अच्छा लगता है। तो ये 4 थीम मुझे लगता है ये काफी इस डेकेड की थीम है। इसको आप 1 साल 2 साल की कुछ मत दिखिए, काफी वेल्थ क्रिएशन होने वाला है इन 4 थीम्स। तो सर, ये जो अभी तक आपने चीज बनाई ऑन लाइटर नोट,
सर रिलायंस इंडस्ट्रीज ना रिलायंस वो हर directly थीम में और मौजूद है, indirectly- सब कुछ तो कर रहे हैं वो, उन्होंने छोड़ा क्या? तो जो जो आपने थीम्स बताई उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलायंस डायरेक्टली मैं मानता इनडायरेक्टली हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज मैं बिल्कुल कर सकते हैं, बट सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालने चाहिए। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, 25 30 35 स्टॉक्स का, अच्छे से उसको रिसर्च करिए। और एक मैं बार बार ये निवेशकों को बोलूंगा कि ये फुल टाइम जॉब है। अगर आप समय दे सकते हैं, आपके पास कंटेंट अच्छा है, आप रीडिंग कर सकते हैं रेगुलर, तो खुद करिए, नहीं तो किसी प्रोफेशनल के हेल्प लीजिए। किसी के कहने पर कि मैंने टीवी पे आज कुछ बोल दिया या मैंने कहीं किसी व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ लिया, उस बेसिस पे इन्वेस्ट मत करिए। आपका हार्ड अर्न मनी है, अच्छे से। आज हम एक मोबाइल फोन भी खरीदते हैं, 4 बार मॉडल्स नए चेक करते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं तो खरीदते हैं। ये तो आपकी जमा पूंजी है लाइफ की। तो थोड़ा सा मेहनत करके रिसर्च करके। राइट गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिज तक को अपने समय देने के लिए। बहुत